Okay. So let me start with the session. A very good evening to all the students, all the FMG aspirants who are attending this session. Some of you know me well, some of us are meeting for the first time. I am Dr. Sandeep Sharma. I've done my MD Pediatrics from PGI Chandigarh, and for the last almost 9 to 10 years now, I've been teaching, training students for various entrance exams. So it's my pleasure to be here, to be discussing this session with you. Just waiting for some technicalities to be taken care of, and then we start with the rapid fire session. Think of this session like IPL season is here. I hope you are concentrating on the exams and not on IPL. But if it is an IPL or a 2020 match, think of it as the last 5 overs. So this session is going to be like that, last 5 overs. So we are going to go very, very rapidly here. I know time is at a premium and all of you are revising quite well. What I will be doing in this session is, I will not be discussing topics. What I will be discussing is actual questions asked in the last 5 to 6 years of the FMGE exam. Actual questions, questions which are often being asked, questions which have a high repeat value. I will be discussing them not randomly. I will be taking one question. I will be discussing all points related to it, and then I will be showing you similar questions to that which have been asked in the past. It will help you in revision, it will make you practice the previous year questions, and this video please save it 1 week before the exam also. Please go through it once in a 2x speed so that your revision part is done. So I hope whatever platform you are following, whatever preparation you have done, you will be benefiting out of it, right? And yes, thank you very much. Good evening all of you. I am quite well. I will not be answering most of the queries here because once I start, within next 60 minutes, I have to finish all the 78 to 80 questions which I will be discussing. After that, in the end of this session, at 6 o'clock, I will finish off this session. I will spend 2 or 3 minutes talking about general tips for FMG aspirants, especially those targeting the June exam and the likely December exam. And in case you have any doubts, I will be taking up live at that moment, right? So let me start with the session. Let me start with these are my details in case you want to get in touch with me after the session, and in case you have any queries related to in general preparation and specifically regarding pediatrics. So let me start with the question number 1. The question was asked in FMGE question December 2021. So it was asked in December exam. The following line diagram represents growth of body organs with age. Which of these curves will represent the lymphoid organ growth? Now 4 types of curves are shown here. Before we come to this question, let us try to understand these curves. These curves are known as growth curves. The growth curves were given by a person known as Scammon, so they are also called as Scammon's curves. So whether they ask in the exam Scammon curve or they ask growth curve, it is the same thing, right? So in a child, the growth of a particular tissue follows a particular pattern. This is what these growth curves show. How you are going to remember? Let us do a quick fire revision. Look at the first chart. You will find that in the first chart, about 90% growth is happening by 2 years of age. So right, you can see 90% growth is happening by 2 years, and about 3 to 4 years, 100% growth happens, and then it remains the same throughout. Which is the organ or tissue which shows a growth like this? Yes, it is the brain tissue or neural tissue which shows a growth curve like this, right? So if you get a question like this in the paper, the answer will be brain or neural tissue, right? Excellent answer. Devajaya is already answering, and some of you are answering it quite well already. Look at the second curve. In the second curve, we find that from 0 to about 4 years, the growth was rapid. 4 to 8 or 4 to 10 years, the growth became static. And then again, 11 to 12 year onward, the growth again picked up. This is the typical growth of an actual child, the somatic tissue growth. So the second one is somatic tissue growth. Somatic tissue growth, the type of growth curve is known as S-shaped curve. So it is already a past question, not in FMG exam, but in NEET PG exam, that S-shaped curve is shown by which type of tissue? Somatic tissue. The general body tissue shows this kind of growth. When I sit in my OPD, parents often come to me. They say, I have a 5-year-old child. Earlier the child was growing rapidly, now he has slowed down. So I have to explain to the parents that your child is following a normal somatic growth curve. It is normal for every child. First 4 year rapid hoga, then it will be static for some time, फिर again take up करेगा कब? When puberty will start.
So this type of growth curve is called as somatic growth curve. Look at the third growth curve. You will find that maximum tissue mass is between 4 to 8 years. So around 8 years or so, maximum tissue mass is attained and then it becomes stable. It decreases a bit and becomes stable. This is the lymphoid tissue growth. This is the lymphoid tissue growth, right? And the fourth one is very easy to understand. The growth of the tissue was absolutely negligible until puberty started, and then under the effect of hormone it simply picked up. So this is the gonadal growth. This is the gonadal growth. So you can get as a single image, you can be asked as a multiple images, and already once it has been asked in FMG exam. So go back to the question, which of the following represent lymphoid organ growth? The closest answer among the options given is A option, and so the answer to this question is A, right? Many times you will not find the perfect answer, but the closest answer you have to go for. So A option is showing the lymphoid tissue growth, B is showing the brain tissue growth, C is showing the somatic growth, and D is showing the gonadal growth. So remember, this question can be repeated. Next time they can ask some other tissue in the exam. So first thing, first point with explanation point is done. Let us move to the next question. First tooth to erupt in a child is. Now, lot of things, lot of pointers are asked in exam, but one thing which keeps recurring in FMG exam is, which is the first tooth to erupt in a primary dentition and which is the first tooth to erupt in a secondary dentition. The question which was asked, when I reconfirmed, a lot of students who have already cleared the exam, they said, sir, they were asking about the primary dentition. So what is the point that you need to remember regarding this point? So there are two types of teeth. So I'll give a heading. Teeth in the children, you can have primary teeth and you can have the permanent teeth, right? What are the questions that can be asked? The only question which is asked repeatedly in the exam is, what is the first tooth to erupt? Overall first tooth to erupt in primary dentition, it is yes. Many of you are answering it correctly, excellent. It is lower central incisors, lower central incisors. Next time they can repeat the question and ask you, when does lower central incisor erupt? According to textbook of O.P. Ghai, it erupts between 6 to 10 months. So between 6 to 10 months, lower central incisors erupt. And if they ask you which is the first permanent to erupt, the answer will not be lower central incisor, the answer will be the first molars. First molars. And when do the first molars erupt? First of all, they erupt between 6 to 7 years, right? So please add it to your notes, revise it multiple number of times. There is also a rule which says that teeth in the upper jaw usually erupt earlier compared to teeth in the lower jaw. The only exception to that is this lower central incisors and sometimes the second molars. So as an additional point, extra edge point, those targeting December exam or possibly next exam, they can write a standard one-liner additionally that in general, in primary dentition, the upper jaw teeth, they erupt earlier than lower jaw teeth. Except the one which we just discussed, lower central incisor, which is actually the first tooth to erupt, and second molar. So this is the extra edge point which you can remember and add to your notes. So answer to this question is yes, absolutely rightly answered by most of you. That is lower central incisors. Thank you Rajiv Dhawan sir for taking out time in your busy schedule and posting a comment here. It's my privilege to take a class with such a vivacious crowd. We already have around 100 students watching this. So let's pick up the speed further. Look at the next question. All of them, see, all of the questions I have selected are recent questions. All of them are actual questions, right? Actual means not exact question, but there can be a minor variation in the recall. So the next question says, by WHO reference, child's height for age below -2 standard deviation is called. What is your answer? It is a June 22 FMG question. What is your answer? Height. Agar weight for height come ho, that is called as wasting. And if height for age come ho below -2 standard deviation, what is that called as? That is called as stunting. That is called as stunting. So the answer to this question, is B. Yes, it is stunting. Devajaya has answered
very correctly. Most of you will be answering it correctly. B is the correct answer. So what are the points to revise here? This is a revision video I am doing. Those who have prepared well, see how many questions you are able to answer. Those who are yet to prepare or who are in the preparation phase, save this video, revise it after your pediatrics thing is done. Whatever source you are following, you will benefit from it, and please listen to this video again at least once before last week before your FMGE exam, and at 2x the speed. So what are the points to remember? I am giving the heading nutritional indices. All the one-liners asked in the recent exams of FMG, I will be summarizing here. Nutritional indices. First thing, weight for age. The first nutritional index followed in children is weight for age. What is the interpretation? If weight for age is below 80% of expected, we say the child is underweight. We say the child is underweight, right? Second parameter is weight for height. Weight for height. If weight for height is below -2 standard deviation of the mean, also written as below -2 Z score. Z score standard deviation for our purpose, for entrance purpose same होता है, right? PSM में सेम नहीं होता, बट फ्रॉम आर पर्सपेक्टिव, क्लिनिकल पर्सपेक्टिव, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेम होता है, तो मानकर चलना है स्टैंडर्ड डेविएशन Z स्कोर कुछ भी पूछ सकते हैं, सेम होगा. वेट फॉर हाइट, इफ इट इज बिलो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, द लाइकली आंसर इज गोइंग टू बी वेस्टिंग इन द चाइल्ड, राइट? If third parameter we follow is height for age. If height for age is below -2 standard deviation, we use the word stunting, and this is what this question is asking. So what is the definition of underweight can be asked, wasting it can be asked, stunting it can be asked. What is the interpretation? Remember that if the patient is having underweight, it can either be acute or chronic malnutrition. It can either be acute or chronic malnutrition. अगर बोलें कि wasting है, wasting is affected only in acute malnutrition. So wasting will indicate only acute malnutrition, and stunting will indicate only chronic malnutrition. तो एक patient है, एक child आया, question says the child has both wasting and stunting at the same time. What is your likely diagnosis? The answer will be acute on chronic malnutrition. Chronic तो था ही, ऊपर से acute भी हो गया. So acute on chronic malnutrition. So ये सारी terms हैं, they are confusing, they seem confusing, but keep them simple. किस में आप क्या cut off use कर रहे हैं, and what is the interpretation of that? That is what you need to remember. End of the day, right? So these are the 3 nutritional indices frequently asked. June से पहले they were not asked in the last 3 years. If you look at the older papers, 14, 15, 16, 17 में ये बड़ा frequently पूछा गया है. So I'm not going into details of those older papers, but still these are the 3 points that I feel you should remember before you sit for the exam. Let us move further. Let us look at the next question. FMG January 23 question. Those who have given the exam would know कि ये question आया था exam में. True statement regarding the following malnutrition state. तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? What you can find in this? Now look at this child. You can find that this child is having, here is present. Here is present in the child, here is not absent. Second, you can find that this child is having a protuberant abdomen, जिसे क्या कहते हैं हम? Pot belly. And most importantly, see carefully here, his lower limbs, you will find that this child is having edema in the lower limbs. So pot belly, edema and hair being present, what is the likely diagnosis we are looking at? What is the likely diagnosis we are looking at? We are looking at Kwashiorkor. And Kwashiorkor is associated with which deficiency? It is associated with severe protein deficiency. So answer to this question is B, Kwashiorkor due to less protein intake. Most of you have answered it correctly. Absolutely right. Let us do a quick revision. In the history of foreign medical graduate exam, the one topic which has been asked maximum number of times, you can check all 19 subjects, maximum number of time, that is Kwashiorkor and marasmus, right? So ये गलत करना is like suicidal for your score. So let us discuss briefly what is severe acute malnutrition. So ये topic को next 5 minutes में मैं detail में discuss करूँगा. Join me in case you already know it. So what is severe acute malnutrition? Severe acute malnutrition. Severe acute malnutrition को short में कहते हैं SAM, right? So severe acute malnutrition is said to be there. Said to be there if any one of the following is seen. If any one of the following is seen.
First, if the child is having severe wasting. If the child is having severe wasting, what is severe wasting? Weight for height below -3 standard deviation. देखो simple wasting होता है -2 से कम, and if it is below -3 also, तो हम कहते हैं severe wasting. Second, if the child is having MUAC, mid upper arm circumference, below 11.5. And third, if the child is having bilaterally symmetrical edema, दोनों legs में edema होना चाहिए, of nutritional origin. If any one of these three are present, we say the child is having SAM. And when we talk about the clinical varieties of SAM, there are two types of SAM that we find. The first variety is known as Kwashiorkor, the second variety is known as marasmus. Question जब भी photo आएगा, you may not find the exact photo being asked in the exam. How you are going to identify? Kwashiorkor में कुछ identifying points हैं which you need to look out for. Kwashiorkor child में hair present होगा, right? Hair का loss नहीं होता, hair easily pluckable होता है, flag sign हो सकता है, but hair will be present. दूसरा, these children will be having a protuberant abdomen, pot belly. तीसरा, these patients will have lower limb edema being present in these patients. चौथा, sometimes plus minus these children will have a rash on the body, right? On the other hand, marasmic बच्चा देख के लगेगा खराब है. So look at the marasmic child. You will find that this child is having no hair. Alopecia is often present. Secondly, you will find that there is severe visible wasting. बहुत severe visible wasting होगा. Muscles totally atrophic होंगे. You will find that there will be wrinkles on the face. इसको कहते हैं monkey faces, बंदर के बच्चे जैसा शक्ल, wrinkles on the face. You will also find, look at this child, there will be loose skin folds present in the thighs, buttocks, axillary region, because fat is totally gone in the body and there will be no edema in the child. So this is how you are going to identify Kwashiorkor. This is how you are going to identify marasmus. Yes, absolutely right. मरा हुआ बच्चा is marasmus. देख के लगता है मरा हुआ बच्चा ये है. If I ask you mortality किसमें ज्यादा होगा, देख के लगेगा marasmus में. नहीं, looks can be deceptive. Looks can be deceptive in entrance exam. In pathological states, looks can be deceptive in real life persons also. तो रियल लाइफ की बात नहीं करेंगे, एंट्रेंस की बात करेंगे. सो एंट्रेंस में रिमेंबर दैट क्वाशियोरकर चाइल्ड हैज अ हायर मोर्टेलिटी बिकॉज इट इज अ चाइल्ड फेलिंग टू अडेप्ट. सो व्हाट आर द की पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट क्वाशियोरकर एंड मेरस्मस? जल्दी से क्विकली रिवाइज करेंगे. क्वाशियोरकर, व्हाट इज द कॉज? इन क्वाशियोरकर द कॉज इज सिवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी. Severe protein deficiency, right? What are the additional problems? Also, you will find that these children are associated with abnormal or abrupt breast milk weaning, weaning from the breast milk. So, अगर एग्जाम में पूछें which variety of malnutrition is triggered by abnormal or abrupt weaning or prolonged weaning from the breast milk, the answer will be Kwashiorkor. Also, Kwashiorkor children have increased free radical damage, जिससे capillary leakage is very common. And these children fail to adapt to deprivation. They fail to adapt to deprivation, right? They fail to adapt to deprivation. On the other hand, marasmus में calorie protein दोनों deficient हो सकते हैं, but the features are predominantly produced by severe caloric deficiency. Severe caloric deficiency. Calorie means carbohydrate deficiency is there, plus minus protein deficiency. So protein deficiency is usually milder. It may or may not be there. और क्योंकि कैलोरी नहीं है तो कैलोरी जनरेट करने के लिए what the child does is सारा फैट यूज कर लेता है, मसल भी यूज कर लेता है, and that is why there is no buccal pad of fat, wrinkles आ जाते हैं, no fat in the thighs and buttocks, loose skin fold आ जाते हैं, and the child looks very wasted, looks very मरा हुआ because the muscles are also atrophic. And these children, however, they adapt to deprivation. Adapt to deprivation. और नेचर का लॉ है कि जो भी अडेप्ट करेगा he will always survive better. So that is why marasmic child, despite all this problem, he always has a better survival. And adaptation to deprivation, remember that this can occur in starvation states. So starvation states में कौन सा malnutrition ज़्यादा commonly देखा जाता है? It is marasmus which is seen. Now, what are the key points between them? What are the other names? Other names of these
आई एम स्पेंडिंग सम टाइम ऑन दिस टॉपिक बिकॉज ये सबसे कॉमन है, बाकियों के अंदर आई विल बी टेकिंग लेस टाइम. सो अदर नेम्स ऑफ क्वेश्चोरकर, मेनी टाइम्स दे रिपीट द क्वेश्चन क्वेश्चोरकर बट दे डोंट यूज द वर्ड क्वेश्चोरकर. क्वेश्चोरकर इज ऑल्सो नोन एज इडीमेटस सैम. तो इडीमेटस सैम बोले दैट इज ऑल्सो क्वेश्चोरकर. अगर बोले फैट शुगर बेबी, ये 2 बार नीट FMG में आया है, फैट शुगर बेबी, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चोरकर. इफ दे से मैल अडेप्टिव PEM, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चोरकर. अगर बोले डीकंपनसेटेड PEM, कंपनसेट नहीं कर पा रहा है, हालात से समझौता नहीं कर पा रहा है, दैट इज क्वेश्चोरकर. ऑन द अदर हैंड मेरेस्मस, अदर नेम्स, इट इज कॉल्ड एज अडेप्टिव PEM. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन इडीमेटस सैम. It is also known as compensated PEM. The alternative names are very important, right? And what are the key signs? What is the hallmark of kwashiorkor? Hallmark of kwashiorkor is, which is always present, PEMG. PEMG. P stands for psychiatric or psychomotor changes, यानी कि mental changes होंगे इन patients में. तो mental change क्या होते हैं kwashiorkor के अंदर? These children are irritable, हमेशा रोते रहते हैं. They are often apathic, so apathy will be found. What is apathy? Pathological disinterest. And these children will also sometimes have extreme lethargy. Extreme lethargy will be present. Secondly, these children will have E, that is edema. Edema is often present. It can progress to involve ascites also. M stands for muscle wasting, which can be hidden by the edema fluid, and G stands for growth retardation. So इन बच्चों का growth नहीं होता. In addition, you will find that other features which can occur in kwashiorkor, they include, अगर इसमें से कोई भी पॉइंट आपके नोट्स में मिसिंग है, प्लीज ऐड इट. हेपेटोमेगली कैन बी देयर. हेपेटोमेगली कैन बी. गणेश इज सेइंग PDF मिलेगी ना सर? यार PDF का प्लान तो नहीं किया था, अगर आप लोग बोलेंगे तो आई विल सेव दिस फाइल एंड आई विल ट्राई टू शेयर विद यू, है ना. I'll share on my वो, so I'll share the link later on. So hepatomegaly होगा. Then these children will have poor appetite, खाते भी नहीं है. They will have low serum albumin. They will have a flag sign in the hair. Flag sign in hair. Flag sign क्या होता है? Alternate pigmented and depigmented hair. And the hair often is present which is easily pluckable. ऐसा बालों को ऐसा पकड़ो तो हाथ में आ जाते हैं. Easily pluckable. Last but not the least, इनमें रैश होता है. स्किन रैश किस तरह का होता है? फ्लेकी पेंट डर्मेटाइटिस. कुछ बुक्स में एक और रैश भी डिस्क्राइब्ड है, वो बहुत रेयर है, क्रेजी पेमेंट डर्मेटाइटिस. फ्लेकी पेन डर्मेटाइटिस कॉमनली देखा जाता है, विच कैन प्रोग्रेस टू डीस्क्वेमेशन ऑल्सो इन द पेशेंट. दे कैन प्रोग्रेस टू डीस्क्वेमेशन ऑल्सो इन द पेशेंट. ओके डॉक्टर निखिल, पॉइंट टेकन. आई विल शेयर इन द डॉक ट्यूटोरियल ग्रुप. डॉक ट्यूटोरियल टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा. जस्ट गिव मी टाइम टिल मॉर्निंग, बिकॉज इसके बाद मेरा एक और सेशन है फॉर नीट PG पीपल. तो मेरे पास, मैं रात को 10 बजे फ्री होऊंगा एंड आई हैव अ फ्लाइट इन द मॉर्निंग. सो आई विल डू इट, 100% आई विल डू इट. सो अभी सुन लो, सुनना जरूरी है, राइट? और ये वीडियो वैसे भी यूट्यूब पे जाएगा, सो यू कैन ऐड इट टू योर नोट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, एंड दीज दे यूजुअली हैव अ पुअर आउटकम, सो दे हैव अ हाई मोर्टेलिटी इन क्वेश्चोरकर. यहां पर इसके फीचर, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्वेश्चोरकर, ऑफ मैरस्मस. मैरस्मस का कोई भी हॉलमार्क नहीं होता है, मतलब एनी सैम जहां इडीमा नहीं है, दैट इज मैरस्मस. So these children will have no edema, no mental changes, no hair changes because no hair, बाल नहीं, टेंशन नहीं. मैरस्मस का बच्चा जो है उसका लाइफ बड़ा सॉर्टेड है, उसको समझ आ गया है, वो अडेप्ट कर रहा है, उसको समझ आ गया है ये मेरे घर वाले बेकार है, कुछ नहीं देने वाले, दे आर नॉट गोइंग टू गिव मी एनीथिंग, so I will not waste my energy in crying. So there are no mental changes, no irritability, no excessive crying. It is a very calm child. Secondly, मैरस्मस का बच्चे को प्रोटीन है नहीं, कैलोरी है नहीं, तो वेस्ट नहीं करता. बाल उगाएगा, फायदा नहीं है. वो कहता है बाल छोड़ देते हैं, जान बचा लेते हैं. बाल बाद में ले लेंगे, बाद में हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा. जान बचाना जरूरी है. सो देर इज नो ग्रोथ ऑफ नेल्स, नो ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर आर फॉलन ऑफ. थर्ड थिंग अबाउट मैरस्मस इज, ये बच्चों के अंदर एपेटाइट अप रेगुलेट हो जाता है. देर इज अप रेगुलेशन ऑफ एपेटाइट. ये बच्चों को पता है आज है खाना मिल रहा, कल मिले ना मिले खा लो. सो दे हैव अ वोरेशियस एपेटाइट, ऑलवेज हंग्री 24/7. and because they are always hungry and they are trying to adapt, they will always come out better. So other points, they have a voracious appetite. Voracious appetite. Yes, Ribhav, OP Ghai 10th edition has already come.
and I've just got it in my hands today morning only. So I will be putting a small update on the changes and updates. But for those targeting the June exam, that is optional for you. But for December exam wale students ke liye, that will be handy. So voracious appetite will be present. In addition, these children will have wrinkles on the face, which will give a monkey facies. They will have a monkey facies, also called as old man appearance. And they will also have what you call as baggy pants appearance. And these children have no hepatomegaly. Liver is not enlarged. And when you do the blood investigation, it is a very useful point. Serum insulin levels are found to be dramatically reduced in these patients. It is a way of compensating. देखो इंसुलिन बढ़ेगा तो क्या करेगा, वो ब्लड ग्लूकोज को घटा के इट विल फॉर्म फैट. इन बच्चों को फैट नहीं चाहिए, तो ये क्या करते हैं, इंसुलिन लेवल इनका सप्रेस हो जाता है. सो सीरम इंसुलिन लेवल्स आर फाउंड टू बी वेरी लो. इट इज अ सेपरेट वन लाइनर विच हैज बीन आस्क्ड इन द पास्ट. सो सीरम इंसुलिन लेवल्स आर वेरी लो इन अ पेशेंट ऑफ मेरेस्मस एंड दे हैव अ रिलेटिवली गुड आउटकम. तो जहां जहां मैंने फेस टू फेस क्लास भी लिया है एफएमजी का, ये वाला पॉइंट जो था हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था. इन केस इट इज नॉट इन योर नोट्स, प्लीज ऐड इट. ये बहुत प्रोमिनेंटली मेंशन्ड है नए एडिशंस जो टेक्स्ट बुक्स के आ रहे हैं. सो एफएमजी एग्जामिनर्स कैन जस्ट टेस्ट यू ऑन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट. सो ये है हमारा क्वेश्योरकर वर्सेस मेरेस्मस. सो मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स जो मेरे माइंड में थे एंड विच आई फील आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ लिख दिए हैं. ये वीडियो का इसका स्क्रीन का इसका स्नैपशॉट ले लेना, टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इट और ऐड अ नोट्स टू योर अपडेट्स टू योर नोट्स. सो अब जल्दी से इससे रिलेटेड बाकी वन लाइनर्स को रिवाइज करते हैं. अ चाइल्ड, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएमजी क्वेश्चन जून 22, इसी से रिलेटेड है. चाइल्ड हैविंग ग्रोथ रिटार्डेशन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क अंटिल 2 to 3 years, डल है, लेथार्जिक है, पिटिंग इडीमा है. व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस? टेल मी द आंसर. यू नो द आंसर ऑलरेडी. व्हाट इज द आंसर? आई एम वेटिंग फॉर यू. Yes, absolutely right. The diagnosis in these patients is Kwashiorkor because the child is having mental changes. His breast milk ऐसे associated है और pitting edema, breast milk abnormality से associated है and pitting edema is present in the patient. So Kwashiorkor is the answer. Excellent. Next question. The following sign is suggestive of which among the following? ये क्या है? Remember मैंने बोला था alternate areas of pigmented and depigmented hair. कभी पिगमेंट बना नहीं बना, that is known as flag sign. तो ये फोटो आ सकता है एग्जाम में. This can be asked as a visual in the paper. Flag sign जैसा लगता है, salt and pepper look. जॉर्ज क्लूनी है के सिर में हो तो अच्छा लगता है, बट बच्चे के सिर में हो तो वो क्वेश्योरकर का साइन होता है. सो फ्लैग साइन इट्स सीन इन क्वेश्योरकर. क्वेश्योरकर का अदर नेम क्या है? डीकम्पनसेटेड पीईएम एंड दैट इज द आंसर. सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. डीकम्पनसेटेड पीईएम क्वेश्योरकर में दिखता है. कंपनसेटेड पीईएम इज द अदर नेम ऑफ मेरेस्मस. सो दिस इज क्वेश्योरकर and this is marasmus, right. Next, go to the next question. FMG question June 21. This form of malnutrition is predominantly due to which of the following? Pot belly है, edematous limbs हैं, so likely going to be yes, it is Kwashiorkor. So answer is less protein intake in the patient, right. सारा उसी का ही घुमा फिरा के चीजें पूछ रहे हैं. डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग. इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर यू कैन ऑलवेज मार्क इट. शुगर बेबी अपीयरेंस ऑल्सो कॉल्ड एज फैट शुगर बेबी अपीयरेंस. इट इज सीन इन पेशेंट्स विद फैट शुगर बेबी. आई टोल्ड यू अदर नेम फॉर क्वेश्योरकर, राइट. नेक्स्ट मूव फर्दर. मोस्ट स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर टू डायग्नोज क्वेश्योरकर. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. हॉलमार्क क्या है? मेंटल चेंजेस और इडीमा होता है. उनमें से क्या दिया है इस क्वेश्चन के अंदर? इडीमा. देखो दिखते सभी हैं बट क्वेश्चन इज आस्किंग मोस्ट स्पेसिफिक क्या है. ये 2018 का एमसीक्यू एफएमजी का. द आंसर इज डी, दैट इज इडीमा. इडीमा इज, इट इज नाम ही उसका, इडीमेटस मैलन्यूट्रिशन इज देयर, राइट. सो एक्सीलेंट. मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग इट करेक्टली, बट बिकॉज ये हमारा रैपिड फायर सेशन है तो मैं रुक के वेट नहीं कर सकता. सो आई होप यू वोंट माइंड. इफ यू आर गेटिंग द आंसर करेक्ट मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेल. तो कभी 2 घंटे 3 घंटे लंबा सेशन होगा तो आई वेट फॉर यू टू आंसर. अगला क्वेश्चन 2018 में ही आया था, 2 बार क्वेश्चन आया था. अडेप्टिव स्टारवेशन विद इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म इज सीन इन. अडेप्टिव मैलन्यूट्रिशन कौन सा होता है? जहां बच्चा अडेप्ट करता है, वेयर द चाइल्ड इज अडेप्टिंग एंड इंक्रीज मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी कि फैट और प्रोटीन को और मसल को यूज अप कर रहा है, तो कैचेक्सिया हो जाएगा. व्हाट इज दैट कंडीशन? यस, दैट इज मैरस्मस. सो ये वर्ड अडेप्टिव स्टारवेशन
स्टारवेशन से एसोसिएटेड है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है. इन ब्रैकेट यू कैन रिमेंबर दैट देयर इज इंक्रीज्ड फैट एंड प्रोटीन मोबिलाइजेशन to form calories, and the answer to this is B, that is marasmus. Almost all of you have got it correct, and all of the following are seen in Kwashiorkor except old FMG question again. Increased hepatocyte नहीं होता, फ्लैग साइन ऑफ ईयर होता है, हेपेटोमेगली होता है, पैथी होती है. सो दे आर आस्किंग एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट वर्ड मिस नहीं करना, गलत हो जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में. इंक्रीज्ड हेपेटाइट इज द आंसर. दे हैव अ रिड्यूस्ड हेपेटाइट. इंक्रीज्ड हेपेटाइट किसका फीचर है? मैरास्मस का, राइट. मूव फर्दर. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सीन इन मैरास्मस एक्सेप्ट मसल वेस्टिंग होता है, बैगी पैंट्स अपीयरेंस होता है, हेपेटोमेगली नहीं होती, लो लेवल ऑफ सीरम इंसुलिन भी होता है. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? हेपेटोमेगली, विच इज द ऑड वन आउट. बोल रहे हैं क्या नहीं होता? हेपेटोमेगली नहीं होती. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, दैट इज हेपेटोमेगली. लो, अभी मैंने बताया सीरम इंसुलिन लेवल्स आर एबनॉर्मली लो इन अ पेशेंट ऑफ मैरास्मस. और इनफैक्ट ये पास्ट एफएमजी में इनडायरेक्टली वो पूछ चुके हैं. जो नए एडिशन टेक्स्ट बुक्स के आ रहे हैं उसमें ये डायरेक्टली लाइन मेंशन्ड है. तो आपके एफएमजी एग्जामिनर फिर से एक्टिवेट होके इसके ऊपर नया क्वेश्चन बना सकते हैं. सो थिंग्स विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, you have to remember everything about it. The easiest way to get a top score in FMG exam or for any entrance exam is jack of all subjects, master of some. What it means is, जो सब पढ़ रहे हैं मैंने भी पढ़ा, जिससे हर बार क्वेश्चन आ रहा है उसको डिटेल में पढ़ा. You do it for every subject according to weightage, easily clear the entrance exam, and that is why practice of past papers is so important. Look, moving further, child brought to casualty has complete loss of subcutaneous fat, wrinkled skin, visible muscle wasting. फैट चला गया, रिंकल स्किन आ गया. मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज, दिस इज द लाइकली डायग्नोसिस इज मैरास्मस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इन दिस पेशेंट्स इज कार्बोहाइड्रेट और कैलोरिक डेफिशिएंसी. कार्बोहाइड्रेट और कैलोरिक डेफिशिएंसी, राइट. सो कार्बोहाइड्रेट और कैलोरिक डेफिशिएंसी, रिमेंबर दिस. सो आंसर इज करेक्ट. We're done with malnutrition. Let's move to other topics now. Boy presented with blue sclera and excessively fragile bones prone to repeated fractures. What is the likely diagnosis? Think, patient में है blue sclera और repeatedly fracture हो रहे हैं. So it is a skeletal dysplasia where abnormal brittle bones are present. So the likely diagnosis in the patient is, it is a December 2020 question. Yes, it is osteogenesis imperfecta. Osteogenesis imperfecta is also known as brittle bone disease. It is known as brittle bone disease. So brittle bone disease, इसके बारे में 4 या 5 पॉइंट कर लेते हैं. सबसे पहला, it shows autosomal dominant inheritance. Some patients can be sporadic. They arise due to de novo spontaneous mutations. Osteogenesis imperfecta has a classic triad. What is the triad of osteogenesis imperfecta? MCQ on this has been asked previously. First thing, they have blue sclera. Blue sclera. Can you see in this image? They have a blue sclera. So bluish sclera will be present. Secondly, they will have decreased bone strength leading to recurrent fractures. So easy bone breakability, right? And thirdly, they will have deafness. So this is the classic triad, and this triad was given by a person known as van der Hoeve. So it is also called as van der Hoeve syndrome or van der Hoeve triad of osteogenesis imperfecta. So ये alternative name याद कर लो, please add it to your notes. Van der Hoeve syndrome या van der Hoeve triad of osteogenesis imperfecta. आजकल these days a lot of overlap questions, integrated questions are asked in the exam. So if they ask you pathology के साथ integrate कर दे, which is the most common collagen defect seen in patients of these patients of osteogenesis imperfecta, it is type 1 collagen which is defective in most of these patients. और इसमें जो classification यूज की जाती है उसका नाम होता है Sillens classification. Sillens classification, right? Sillens classification. ये Sillens classification डिटेल्ड है. आपको FMG के लिए इतना याद रखना है कि टाइप 1 जो होती है ये मोस्ट कॉमन होती है और माइल्डेस्ट होती है. टाइप 2 इज पेरीनेटल लीथल. ये पेट में ही मर जाते हैं या बर्थ के इमीडिएटली बाद मर जाते हैं. सो मोस्ट सिवियर इज टाइप 2. टाइप 3 ये सर्वाइव करते हैं लेकिन ये सिवियर फॉर्म होती है. एंड टाइप 4 जो होती है ये मॉडरेट फॉर्म होती है, राइट. सो दिस इज रिगार्डिंग दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, द मैक्स यू नीड टू नो. इसके बियॉन्ड नहीं जाना है. This is the max that you need to know. Type 1 collagen defect due to, yes, excellent. Most of you are answering it correctly. Good.
Let's move further. अगला क्वेश्चन, चाइल्ड प्रेजेंटेड विद पैल्पेबल रैश ऑन लिम्स, हेमेचूरिया. सो रैश आया, हेमेचूरिया हुआ, रीनल इन्वॉल्वमेंट, जॉइंट पेन हुई, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, और प्रीसीडिंग रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हुआ था 1 वीक अगो. व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस? ऐसी कौन सी इलनेस है? व्हाट इज द इलनेस इन विच initially there will be infection, 1 to 3 weeks later the patient will develop a rash on the lower limbs, there will be renal plus minus GIT involvement and joint involvement. Yes, absolutely correct. The answer is Henoch Schondlin purpura. Shubham Wag, RK Saini, Priyanka, Kelly, Riya, Deva, Vikas, Priya, Jan, Vishal, Nikhil, all of you are answering it correctly. अब सबका स्कोर भी अच्छा आना चाहिए एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में भी परफॉर्म करना है. सो Henoch Schondlin purpura. So what are the things about this that you should know? Let us quickly do a flowchart based revision of Henoch Schondlin purpura. So HSP, Henoch Schondlin purpura, also known as IgA vasculitis, alternative name है इसका. Most common age or peak age, which is a past question, it occurs between the age group of 4 to 8 years. However, can occurs in adults also. राइट. HSP में इनिशियल इन्फेक्शन होता है विच इज यूजुअली अ वायरल इन्फेक्शन. 1 to 3 weeks later there is a tetrad of HSP which appears. What is the tetrad of HSP? 4 चीजें जो एक साथ होती हैं. फर्स्ट थिंग, there will be a palpable purpuric rash and this is considered to be the hallmark. Skin involvement is considered to be the hallmark. So palpable purpuric rash, this rash will appear on lower limbs, it will appear on the buttocks, and there will be no thrombocytopenia in these patients. So no thrombocytopenia. ये पुराना नीट पीजी का क्वेश्चन है, no thrombocytopenia. Second, in patients में होता है joint involvement. Joint involvement is pain in the joint or inflammation in the joint. So pain भी हो सकती है, arthralgia, or complete inflammation, arthritis can also develop. Third, GIT involvement, which is seen, which manifests in the form of colic abdominal pain. Sometimes, rarely, you can have GI bleeding also, and then renal involvement, which will occur in the form of hematuria, with or without proteinuria. So glomerulonephritis features will appear. अगर पूछे एग्जाम में और पढ़ने का मन करे तो ये 100% पेशेंट्स में होता है. This is seen in about 75% patients, this is seen in 80% patients, this is seen in only 30 to 50% patients. And biopsy कर सकते हैं इसमें. If you do renal biopsy, you will find that these patients are having mesangial immunoglobulin A deposit. तो IgA deposit होता है टिश्यू के अंदर. Look at this rash. Can you see the rash? Buttocks को involve कर रहा है, pressure points को involve कर रहा है, lower limbs को involve कर रहा है. Usually face is not involved and upper trunk is usually not involved. And treatment in most of these patients is supportive. Supportive treatment है. If there is severe GIT involvement होगा तो you can give a short course of prednisolone in the patient. Otherwise steroids are not needed. 1 to 3% patients के अंदर हो जाता है chronic kidney disease, also called as end stage renal disease. तो इसलिए long term follow up करना जरूरी है, right? So this is a brief review, quick review of Henoch Schondlin purpura which I have done. So any point if it is missing in your notes, please add it to your notes. Let's move further. Look at the questions. तो इसका आंसर क्या आता है? Henoch Schondlin purpura, right? Let's move further. Hallmark finding in IgA vasculitis. अभी हमने पढ़ा. Hallmark क्या होता है? Hallmark is skin involvement. So rash will be the answer. So non-thrombocytopenic purpura. So purpuric rash which is non-thrombocytopenic is the hallmark finding. Hallmark का मतलब होता है जो हमेशा present होता है. Then we have the next question, FMG question, June 22. Look at the question. 7-year-old female child, crampy abdominal pain, rash mainly on the back of her legs and buttocks as well as on the extensor surface of forearm. Laboratory analysis reveals proteinuria and microscopic hematuria. तो यहाँ joint नहीं involve हुआ लेकिन rash आ गया, GI involvement हो गई और GI और साथ में renal involvement हो गई और rash भी कहाँ आ रही है? It is appearing on the buttocks and lower limbs. So likely diagnosis in the patient, again, yes, it is D, that is Henoch Schondlin purpura, right? And चौथा क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है, आपको पास्ट पेपर वाली जो बुक आप पढ़ते हैं उसमें भी ये दिया हुआ है. Peak age for HSP, it is 4 to 8 years. Let's move further. Next question. First, I'll show the question, then we'll talk
details of this. 5-year-old boy, ये FMG जनवरी का क्वेश्चन है. 5-year-old boy presented with periorbital and pedal edema with ascites. So significant edema हो रहा है बच्चे के अंदर, right? On electron microscopy, effacement of foot process of podocyte was seen. And the child is receiving corticosteroid. What is the diagnosis? So ये पेशेंट के अंदर जब significant edema के साथ आए, renal edema origin हो, फेस के आसपास हो, you should think of nephrotic syndrome. And कौन सा nephrotic syndrome है जिसमें foot effacement of foot process of podocyte होती है? The most common cause, yes, minimal change disease. तो minimal change disease is the likely answer here. So answer to this question is A, that is minimal change disease. So approach to MCQ. अब MCQ के लिए याद क्या करना है? इसके ऊपर बड़े frequently questions आते हैं, overlap questions आते हैं. You get in paper 1 also, paper 2 also. Sometimes there is an element of pathology also, pediatrics also. How you are going to solve? So suppose there is a child with periorbital edema. Child with periorbital edema, right? Question कह रहा है, फेस के ऊपर edema है. There can be two possibilities. It is severe edema and the patient is also having massive proteinuria. Question says massive proteinuria है. इसका मतलब urinary protein will be, ये flow chart बना रहा हूँ, ये मेरा handheld flow chart है. You will not find directly in the books. So urine protein 3+ या 4+ है. तो likely diagnosis in the patient is going to be nephrotic syndrome, right? Nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome further दो तरह का हो सकता है. It can be of two types. It can be primary form, which is most common, and secondary form. Primary form जो होता है उसके अंदर there will be no hematuria, no hypertension. If you do light microscopy, you will find that it is normal. If you do electron microscopy, you will find effacement of foot process of podocytes. और प्राइमरी फॉर्म में डायग्नोसिस क्या बनेगा? मिनिमल चेंज डिजीज. मिनिमल चेंज डिजीज, राइट? सेकेंडरी फॉर्म जो होगी उसके अंदर हाउ विल यू आइडेंटिफाई? ये रेयर होता है. इट इज रेयर. इट इज एसोसिएटेड विद, इट इज ड्यू टू FSGS इन द पेशेंट. और इन पेशेंट्स के अंदर हेमेचूरिया इज प्रेजेंट एंड हाइपरटेंशन इज प्रेजेंट. और यूजुअली ये एज बिलो 1 ईयर में देखा जाता है एंड मोर देन 10 ईयर्स में देखा जाता है. एंड इसके अंदर यू नीड टू डू रीनल बायोप्सी इज मैंडेटरी. सो रीनल बायोप्सी से पता लगेगा कि एग्जैक्ट कॉज क्या है. बट फॉर्चुनेटली ये बच्चों में रेयर होता है. दिस इज द प्राइमरी फॉर्म दैट वी फाइंड इन दीज पेशेंट्स, राइट? अब ये फोटो देखो, फोटो में दिया है ये फुट प्रोसेसेस हैं पोडोसाइट्स की. देखो यहाँ क्या हुआ, फुट प्रोसेस का इफेसमेंट हो गया. लुक एट दिस, द फुट प्रोसेसेस आर डिस्ट्रॉयड. लुक एट दिस, दीज आर द फुट प्रोसेसेस, वेल फॉर्म्ड है ना, ऐसा 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 है. यहाँ पर लॉस हो गया, टोटली क्लम्प हो गए. दिस इज व्हाट हैपेंस इन मिनिमल चेंज डिजीज. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन मिनिमल चेंज डिजीज, राइट? दूसरी तरफ हमारा पॉसिबिलिटी क्या है? ये तो हो गया नेफ्रोटिक की बात. सपोज क्वेश्चन आया नेफ्रेटिक सिंड्रोम के ऊपर, हाउ आर वी गोइंग टू गो फॉर इट? निखिल, इसका आंसर डिलेड होगा यार. एक बार सेशन खत्म हो जाए, आई विल टेक अप ऑल योर क्वेरीज, राइट? एट दैट टाइम आई विल टेक अप क्वेरी. सो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि चाइल्ड विद पेरिऑर्बिटल एडिमा है बट ये माइल्ड एडिमा है. दूसरा, इन पेशेंट्स में हेमेचूरिया इज प्रोमिनेंट. जब हेमेचूरिया प्रोमिनेंट होगा तो क्वेश्चन बोलेगा पेशेंट में है कोला कलर्ड यूरिन. डार्क कलर्ड यूरिन और कोला कलर्ड यूरिन का हिस्ट्री दिया होगा. थर्ड, इन पेशेंट्स के अंदर क्वेश्चन बोलेगा इट वॉज प्रिसीडेड बाय स्किन इंफेक्शन, जैसे कि बॉइल्स हो या सोर थ्रोट. तो ऐसे पेशेंट्स में एंड हाइपरटेंशन विल ऑल्सो बी प्रेजेंट. सो ऐसे पेशेंट्स में द लाइकली डायग्नोसिस विल बी एक्यूट नेफ्रिटिक सिंड्रोम. एक्यूट नेफ्रिटिक सिंड्रोम ऑल्सो रिटन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. एंड अगर पूछें कि इसका मोस्ट कॉमन क्या है बच्चों में, मोस्ट कॉमन कॉज इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. फर्दर पूछे इन पेशेंट्स के अंदर द ASO टाइटर इज एलिवेटेड. ASO एंटीबॉडीज होती है अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस. एंटी DNAs भी बढ़ जाता है. और इन पेशेंट्स के अंदर सीरम C3 जो C3 कॉम्प्लीमेंट है ये घट जाता है. इसके ऊपर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट PG में.
एक बार indirect question has been asked in FMG exam. So please add it to your notes. Treatment in post-streptococcal nephritis is supportive. So supportive therapy is given in post-streptococcal nephritis. अब सवाल आया कि इनका क्या करना है minimal change का. So minimal change disease यानी कि nephrotic syndrome के अंदर drug of choice for initial therapy is always prednisolone. However, in case it is a steroid resistant nephrotic syndrome, steroid resistant कहते हैं if there is no response to steroid more than 6 weeks, equal to or more than 6 weeks, तो ऐसे patients में हम देते हैं साइक्लोस्पोरिन या टैक्रोलीमस. ये एडिशनल पॉइंट है जो मैंने बताया. सो ये जो मैंने अभी फ्लो चार्ट बनाया है इसको देखो, देखने में छोटा सा लग रहा है बट दिस विल कवर अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड सम मेडिसिन पॉइंट्स ऑल्सो, सम पैथोलॉजी पॉइंट्स ऑल्सो, राइट. सो प्लीज एड इट टू योर नोट्स. दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल. ये वही चीज है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दिस इज द सेम विच यू हैव ऑलरेडी रेड बट आई हैव जस्ट कन्वर्टेड इट इनटू अ वे that it will be useful for your quick revision. End of the day, you can't read everything. So please read it, please add it to your notes and let's see questions कैसे आ रहे हैं. तो इसका तो आंसर पता लग गया, minimal change था. Let's move to the next question. FMG question, December 2020. Let us see if we can solve our MCQs based upon this flowchart or not. 10-year-old child presents with clinical edema, 4+ urinary protein. So significant proteinuria है. No hematuria. पास्ट हिस्ट्री भी है सिमिलर एपिसोड्स की. व्हाट इज द इनिशियल थेरेपी ऑफ चॉइस. तो डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम. कौन सा वैरायटी? मिनिमल चेंज डिजीज. तो मिनिमल चेंज में इनिशियल थेरेपी ऑफ चॉइस क्या है? वी हैव ऑलरेडी डन. यस, स्टीरॉइड्स. दैट इज प्रेडनिसोलोन इज द आंसर. सो सॉल्व हो गया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चाइल्ड प्रेजेंटेड विद अ बॉयल ऑन द लेग. स्किन रैश आया, स्किन पे लीजन आया. अब उसको हो गया कोला कलर्ड यूरिन. इडीमा का बात नहीं किया उन्होंने. तो कौन सी कंडीशन है रीनल वाली जिसके अंदर हेमेचूरिया होगा विद और विदाउट माइल्ड एडिमा एंड प्रीसीडेड बाय अ इंफेक्शन, आइदर सोर थ्रोट और स्किन इन्फेक्शन. यस, इट इज एक्यूट नेफ्रिटिक सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. सो दिस 2021 का दिसंबर क्वेश्चन है. सो दिस इज ऑल्सो सॉल्व्ड बाय द सेम फ्लो चार्ट. सो आई हैव नॉट टेकन अप दी ओल्डर क्वेश्चंस. 17, 18 और 16 में भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर. सो ऐड दिस कंसेप्ट टू योर नोट एंड यू विल बी एबल टू मार्क द क्वेश्चन विद फुल कॉन्फिडेंस इन द पेपर, राइट. सो मोस्ट ऑफ योर आंसर करेक्टली सी. लेट्स मूव फर्दर. ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ चलते हैं. अगेन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक. ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन हाउ मच टाइम आफ्टर बर्थ. ये FMG का जनवरी का क्वेश्चन है इस बार का. सी, आइडियली breastfeeding should be started as soon as possible, but the WHO UNICEF guideline including 2021 update says that it should be started within an hour of birth, and the answer to this question is A, that is within 1 hour. Within 1 hour of the birth it should be started, right. So breastfeeding should be started within 1 hour of the birth. What are the other one liners regarding breastfeeding which you need to remember? जल्दी से rapid fire one liner याद करते हैं. First thing, breastfeeding should be started within 1 hour of birth. Within 1 hour of birth. Second, exclusive breastfeeding given till what age? It should be given till 6 months of age. उसके बाद क्या करेंगे? क्या बंद कर देंगे? After that बंद नहीं करेंगे. You continue breastfeeding till 18 to 24 months of age. 24 month यानी कि 2 साल के बाद बंद करेंगे. साथ में देंगे complementary food. So complementary feeding should be started. So semi-solids will be introduced in the diet, right? So complementary, there is no such thing as supplementary. Complementary feeding word याद रखना है. पुराना एक क्वेश्चन है उसमें supplementary feeding था, वो आंसर नहीं था. So complementary feeding should be given. Third thing, what are the types of breastfeed? Types of breast milk. Types of breast milk. So types of breast milk में सबसे पहले आता है कोलोस्ट्रम. कोलोस्ट्रम जो होता है ये फर्स्ट 72 आवर्स में रिलीज होता है. कोलोस्ट्रम इज येलो इन कलर, थिक इन कंसिस्टेंसी, इट हैज मोर प्रोटीन एंड इट इज रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन. मोस्ट कॉमन इम्यूनोग्लोबुलिन इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए. दूसरे टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क होता है ट्रांजिशनल मिल्क. ट्रांजिशनल मिल्क इज सिक्रेटेड बिटवीन 4th to 14th डे. इनके अंदर क्या होता है? प्रोटीन कंटेंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड फैट एज वेल एज फैट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, कैलोरीज दैट इज द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, एंड देन वी हैव द मैच्योर मिल्क.
Mature milk is the one which is secreted beyond second week of life, that is 15th day onwards. And इसके अंदर क्या होता है, lactose high होता है, यानी कि carbohydrate is high, fat is moderate level, whereas protein is found to be significantly low. So these are the three types of breast milk. Then in human milk, very important, remember, in human milk lactose is more, fat is less, and protein content is less compared to animal milk. But ये अच्छा है, this is good compared to cow and buffalo milk, this is good. Why? Because lactose ज़्यादा होने से the chances of hypoglycemia are reduced. Fat कम होने से the child does not become fatty. The actual amount of fat, the quality of fat is better. Even the quality of protein is better. Remember that in breast milk, that is the human milk, there is DHA which is present, docosahexaenoic acid, which is essential for brain and retina. It is essential for brain and retina. ये animal milk में नहीं मिलता. Secondly, breast milk के अंदर whey protein होता है. Also, it is rich in amino acids like taurine and cysteine, जो कि animal milk में नहीं मिलता. Thirdly, breast milk is also rich in, नया एडिशन में मेंशन किया गया टेक्स्ट बुक के, EGF. EGF is epidermal growth factor. It reduces the chances of allergy in later life and decreases gut infections also. So this is a new thing, please add it to your notes. Epidermal growth factor भी होता है. So that is why breast milk के ये benefits हैं, right? And yes, I am coming to that. Breast milk fat is also rich in MUFA and PUFA. DHA is a type of PUFA only, so I am not going into detail. What are the vitamins which are deficient in breast milk? It is vitamin K which is maximally deficient, followed by D, followed by B1. C sufficient होता है, B12 भी sufficient होता है, unless mother is having pernicious anemia or she is a vegan diet, right? Vegans India में नहीं होते हैं, mostly India में हम लोग दूध ले लेते हैं, so that is not a problem in India. Then what is the absolute contraindication for breastfeeding? एक ही है, only one. It is galactosemia in the child. Galactosemia in the child. It is galactosemia in the child, right? And then last but not the least, remember that tuberculous bacillus are not transmitted via breast milk. They are not transmitted via breast milk. So, कुछ pointers हैं. All of these pointers have been asked in some way or the other in the past FMG exams. So, please add it to your notes. So, it's a quick fire revision we have done. Running short on time, I'll have to increase the speed. We started at 6:10 anyways. So, हमारे पास अभी 15 minute है. So, let's move further. Let's look at the questions. FMG January recall question. Which is a contraindication to breastfeeding? We have already done. We have just finished. The answer is galactosemia in infant. Right? Galactosemia in infant. Which vitamin is maximally deficient in breast milk? It is vitamin K, which is maximally deficient in breast milk. इतना deficient है that child can develop hemorrhagic disease of newborn, and a particular intervention has been devised. Government of India says all children at delivery after birth they should receive 1 dose of vitamin K because it can be lethal to the child. Absolute contraindication to breastfeeding, तो ये repeat question था, 2 बार आया है, galactosemia in the infant, right? And all of the following are true about human colostrum except word नहीं miss करना exam में. FMG question 21, it is thick and yellow in color, it is true. Immunoglobulin high is true. High amino acids and minerals, it is true. High sugar is false. They are asking except, and so the answer to this question is high sugar. High sugar नहीं होता, low sugar होता है, low carbohydrate, low lactose content is found in these individuals. Moving further, which of the following is not a component of kangaroo mother care? Kangaroo mother care, mother और child का skin to skin contact होता है, that is kangaroo mother care. What are the 3 components of kangaroo mother care? Let us write down. Mother should be taught about proper positioning of the child, skin to skin contact, child comfortable between the breast, legs abducted, so kangaroo position. Second component of kangaroo mother care, कैंगरू न्यूट्रिशन. कैंगरू न्यूट्रिशन कोई खास न्यूट्रिशन नहीं है,
we ensure that all children receiving KMC are exclusively breastfed, right? And the third one is early discharge and follow up. Because they are low birth weight newborn, तो इनको हॉस्पिटल में रख के फायदा नहीं है. They can be managed at home, but also follow up to see whether KMC is being given properly or not. So look at these options, which is not a component. C is the odd one out, and that is the answer. There is no such thing as supplementary nutrition. I've already told you. So answer to this question is C. Skin to skin contact is a feature. Exclusive breastfeeding is a feature. Early discharge and follow up is a feature. And answer to this question is C. When it came in the exam, many people marked D, thinking कि ये KMC का part कैसे होगा. The original document of KMC clearly says early discharge and follow up is an essential component of KMC. Right? WHO ने दिया है. ऑल्सो कैंगरू मदर केयर मदर ही देगा या फादर भी दे सकता है? फादर भी दे सकता है. एनी फैमिली मेंबर कैन ऑल्सो गिव इट, बट बोलेंगे उसे KMC ही, KFC नहीं बोलेंगे. सो कैंगरू फादर केयर नहीं होता है, कैंगरू मदर केयर ही होता है. इट बट आइडियली इट शुड बी गिवन बाय द मदर. इफ शी इज सिक एंड अनेबल टू गिव, दैट एनी अदर फैमिली मेंबर कैन ऑल्सो गिव. उतना बेनिफिट नहीं होगा, बट सम बेनिफिट इज बेटर देन नो बेनिफिट एट ऑल, राइट? फादर का मिल्क सिक्रीशन इंक्रीज नहीं होगा, फादर चाइल्ड बॉन्डिंग उतना नहीं होगा, बट अगेन it is better than not giving at all. So kangaroo mother care, the next thing. Moving further, vitamin K is given at birth to prevent the following. Vitamin K से क्या prevent होता है? Yes, hemorrhagic disease of newborn होती है, because vitamin K is required for the formation of clotting factors, right? So कितना डोज, अब एग्जाम में पूछा जा सकता है डोज क्या है इसका. All babies who are delivered in a institution, टर्म, प्री टर्म, पोस्ट टर्म, सबको देना है विटामिन के. जैसे बर्थ हो गया, बेबी स्टेबल है, उसको ड्राई करने के बाद उसको बिफोर यू हैंड इट ओवर टू द पेरेंट्स, फर्स्ट थिंग टू डू इज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ विटामिन के एक देना है. व्हाट इज द डोज? द डोज इज 1 milligram टू ऑल बेबीज. व्हाट इज द डिफरेंस? डोज कम कब करते हैं? इफ बर्थ वेट ऑफ द चाइल्ड इज लेस देन 1000 grams, यानी कि एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज, these are the one where the dose is half, that is 0.5 mg. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस है. सो ओवरऑल डोज 1 milligram intramuscular injection vitamin K. However, if the baby is very low birth weight, extremely low birth weight, the dose is half, that is 0.5 mg will be given. It is 0.5 mg, right? Move further. Which of the following vitamin is deficient in xerophthalmia? इस बार का FMG question January 2023. It's an easy one. Xerophthalmia. Zero means dryness. Dryness of cornea and conjunctiva is very common, and ocular manifestations produced by deficiency of vitamin A. So answer to this question is vitamin A. So vitamin A, what are the things that we should remember regarding vitamin A? Vitamin A ka WHO classification is often asked in the exam. So let's do a quick fire revision. So WHO classification of vitamin A deficiency, that is xerophthalmia. So it is divided into two parts. There are the primary signs and there are the secondary signs, right? तो primary sign में क्या होता है? X1A. X1A is conjunctival xerosis. Xerosis means dryness of the cornea. X1B stands for Bitot spots. They appear on the cornea. X2, that is corneal xerosis. Then we have X3A, where there is corneal ulcer, but the size is less than 1/3 of the cornea, whereas X3B is corneal ulcers more than 1/3 size of the cornea. And secondary signs include XN, which stands for night blindness, XS, which stands for corneal scarring, and XF, which stands for fundal changes. Right? So these are the WHO classification. Old FMG question has already been asked based upon this, right? So एक visual भी कर लेते हैं साथ में. Look at this. If what is this? What is this being shown? This is Bitot spots. और पूछें कि Bitot spots किस में कौन सी stage होती है? X1B will be the stage, and that will be the answer. Now what about the treatment of vitamin A deficiency? Treatment is very important. Multiple times it has been asked. I will just show you the MCQs. So treatment में याद कर लो, सबसे पहले तो मेगा डोजेस देना है. So mega doses of vitamin A are needed. अब मेगा डोज कितना होगा वो एज पे डिपेंड करता है. If age of the child is less than 6 months, the mega dose is
50,000 international units. You can give it orally. 6 to 12 months, it is 1 lakh international unit. And more than 12 months, it is 2 lakh international units. Right? Dena kab hai? When to give? In vitamin A deficiency state. In case of all children with vitamin A deficiency, but no SAM. SAM means severe acute malnutrition नहीं है, सिर्फ vitamin A deficiency है. So ऐसे babies में हम देंगे 0, 1 and 28 days पे. ये common mistake है which people make. 0 means the day it is diagnosed. 1 means the next day. 28 days means after about 4 weeks. In case it is a SAM child, kwashiorkor or marasmus child with vitamin A deficiency, same dose will be given, but the regime will be 0, 1 and 14 days. A common mistake people make. Please add it to your notes. Don't get the question wrong in the paper. So 0, 1 and 28, 0, 1 and 14 days. Also, question on it has been asked. If age of the child is more than 1 year, but weight of the child is less than 8 kg, you will give half the age appropriate dose. इसका मतलब ये है, suppose I give you a question. Suppose question comes, 15-month child, weight is only 7 kg. He also has vitamin A deficiency. What will be the doses given in every visit on 0, 1 and 14 days? Normally, above 1 year, you will be giving 2 lakh international unit. But this child is having weight less than 8 kg beyond 1 year. So, you will be giving 1 lakh international unit and not 2 lakh. So, please, all this treatment part which I have written, very important. Please add it to your notes. Right? Next question. Let's see the questions which have been asked in the past. Oral vitamin A dosage in 2-year-old malnourished child weighing more than 8 kg. This is the December 21 question. 2-year-old child weighing more than, less than 8 kg nahi hai. So 2-year-old malnourished child weighing more than 8 kg, yes, the dose will be 2 lakh international units. Right? Agar yahi 2-year-old child less than 8 kg hota, to dose would have been 1 lakh international unit. Right? Which vitamin deficiency? Let's move further. Which vitamin deficiency is associated with the clinical signs shown in the image? ये क्या दिख रहा है? You can see a photosensitive rash and there is also involvement of the peripheries. The covered part is usually not involved. This is the typical rash associated with niacin deficiency. So, niacin deficiency C is the answer. This patient is suffering from pellagra. So, this is a typical example of pellagra, June 22 question. This is, let us revise few words related to pellagra, very frequently asked in the exam. This is the image of a patient who is having Kesel necklace. Kesel necklace is a type of rash which is seen in pellagra. Let us do a quick revision. Pellagra. What is pellagra? It occurs due to deficiency of niacin in the diet. More in maize eaters, right? This you already know. What are the 4 Ds of pellagra? There is diarrhea, there is dementia, CNS involvement, there is dermatitis, that is rash. The dermatitis rash which have been described are photosensitive rash. Photosensitive rash which predominantly occurs in glove and stocking distribution. So, gloves and stocking जहाँ डालते हैं उस area में rash होता है and many times rash takes the form of a Kesel necklace as has been shown in the picture and death can also develop in the patient, right? And what is the treatment of pellagra? Adults में different dose. मैं treatment क्यों लिखवा रहा हूँ? Because ये potential MCQ point है. Adults के अंदर the dose is 100 milligram 3 times daily for 2 weeks. बच्चों के अंदर the dose is very different. It is 6.6 niacin equivalents per 1000 kilocalories per day. In other words, they can ask you a one-liner in the exam. Which is the only micronutrient or vitamin deficiency where vitamin dose is calculated based upon the caloric intake of the child? Niacin. Pellagra is the condition, the deficiency state, where you calculate according to the calorie. बाकी किसी condition में आप calorie के हिसाब से calculate नहीं करते हो. It's a useful fact, will come handy. आज नहीं तो कल काम जरूर आने वाला है. Even if you clear your FMG, you move into NEET PG or next comes or INICT you are sitting, ये fact हर जगह पर high yielding point है. Already exam में आ चुका है. FMG में नहीं आया है, but it can be asked in your exam. Exams are always converging. Let's move further. Let's increase the speed. Child was born with neural tube defect. Neural tube defect हुआ patient को. Which of the following could have prevented it from happening? So neural tube defects arise due to
failure of proper closure of neural tube, which vitamin deficiency prevents it? So folate supplementation can prevent it, right? Folic acid supplementation can prevent it. So let us revise a few facts related to neural tube defect. Only one-liners I will be writing. First thing, neural tube defects, they are the most common group of congenital CNS malformations in newborns. First point. Neural tube defects, they are multifactorial. They have multifactorial pathogenesis. तो एक रीजन नहीं होता है, multifactorial pathogenesis. They arise due to folate deficiency, which is the most important cause in mother in pregnancy. They arise due to teratogens, for example, drug intake. For example, all these anti-epileptics like valproate, they can cause neural tube defects. It can also arise due to syndromes. It can also arise due to environmental toxins. Sometimes no cause is found. Most severe form of neural tube defect, which is not compatible with life, it is anencephaly. Anencephaly में brain बनेगा नहीं, forebrain will not be forming. So it is not compatible with life. Most common as well as mild form of neural tube defect is spina bifida occulta, also sometimes called as occult spinal dysraphism. ये बहुत common होता है, asymptomatic होता है, but if you look at the skin, there will be a tuft of hair present in the lumbosacral region. So if there is a child with tuft of hair in the lumbosacral region, you should suspect underlying spina bifida occulta. That is a mild illness. And how can it be prevented? Prevention can be done by folate, maternal folate supplementation. Maternal folate, what is the dose? The dose is 0.4 mg, that is 400 microgram per day. However, if there is a previous baby with neural tube defect, the dose becomes 10 times, it is 4 mg, that is 4000 micrograms per day. और कब देंगे? Ideally it should be started pre-conceptionally, conception से पहले, and given according to CDC guideline, it is given till 12 weeks of gestation, at least till 12 weeks of gestation you need to give it. So neural tube defect, right? So कभी dose mg में पूछेंगे, कभी microgram में पूछेंगे, so be careful what is being asked in the exam. Let's move further. Neural tube defect shows which pattern of inheritance? I have just told you, it is not a single reason, it is not an inherited condition, but sometimes this was the question which was asked. So the best answer among the options given is multifactorial inheritance, not a single cause. Polygenic multifactorial reason is the for neural tube defect. What is the likely diagnosis? इस बच्चे में क्या दिख रहा है? Again past FMG question. Exact image नहीं मिला, but you can easily see कि उसका forebrain नहीं बना है, brain cerebrum cerebellum are absent, scalp भी नहीं बना है, and eyes ऊपर placed हैं. So this is what is called as anencephaly, not compatible with life. Anencephaly, not compatible with life. Let's move further. Menkes disease is a disorder of. Menkes disease is a disorder of. FMG question December 2021. Remember, Menkes disease is a disorder of copper metabolism. तो कुछ कंडीशंस हैं, जल्दी से वन लाइनर की तरह इनको याद करेंगे. लेट अस रिवाइज, जो अक्सर पूछी जाती हैं. देयर आर टू माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी स्टेट्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम. वन इज मेनके डिजीज जो कि कॉपर से होता है, दूसरा एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका जो जिंक से होता है. हाउ टू डिस्टिंग्विश, व्हाट टू रिमेंबर? फर्स्ट थिंग, मेंकेस डिजीज ऑल्सो कॉल्ड एज मेंके किंकी सिंड्रोम. अदर नेम इज मेंके किंकी सिंड्रोम. किंकी इसलिए कहते हैं बिकॉज किंकी हेयर होते हैं इनके ना, लूज सिल्वर वायर जैसे हेयर होते हैं. सो मेंकी किंकी सिंड्रोम. इट अराइजेस, इट इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन. X-linked recessive condition. The gene involved is ATP7A gene mutation. ATP7B अलग होता है, वो भी आएगा. ATP7A gene mutation is there, which codes for a copper metabolism defect. So it is a copper metabolism defect. So there will be abnormal hair, there will be developmental retardation, and many times mortality can also be seen. So it is a copper metabolism defect. The second micronutrient disease which is inherited and asked in the exam is acrodermatitis enteropathica. Acrodermatitis enteropathica. Acrodermatitis enteropathica जो होती है ये autosomal recessive condition है. What is the gene involved?
SLC39A4 जीन, ये पास्ट FMG का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था. एंड दिस कोड्स फॉर अ जिंक metabolism defect. It codes for a zinc transporter. So it is a zinc transporter defect. And how would you identify these patients? Acrodermatitis enteropathica will have a rash which is perioral and perianal rash with or without associated with alopecia in the patient. So ऐसी rash zinc deficiency से होगी, right? So answer to this question is A, that is copper. Next question. An infant is brought to a hospital because her wet diapers turn black when they are exposed to air. Physical examination of the infant is normal. This disorder is caused by a deficiency of. So wet diaper turning to black is a classic example of inborn error of metabolism called as alkaptonuria. Alkaptonuria. Alkaptonuria is an autosomal recessive condition and there is deficiency of the enzyme known as homogentisic acid oxidase. Remember this, deficiency of homogentisic acid oxidase, also called as homogenticid dioxygenase, is the responsible for alkaptonuria, autosomal recessive inheritance. These children have dark urine on standing which will stain the diapers. Second thing, they will have a black pigment which deposits in the ear, in the nose, and also in the sclera, sometimes even in the joints. When it deposits in the joints, it causes uchronotic arthritis. इसका नाम होता है, arthritis करता है uchronotic arthritis. और इसमें deposition को हम simply कहते हैं uchronosis. So they can ask in exam, what is uchronosis? What is uchronotic arthritis? These patients also develop renal stones. Treatment क्या इन patients का? Treatment supportive होता है. विटामिन सी जो होता है दैट डिक्रीजेस पिगमेंट डिपोजिशन, एंड इफ पॉसिबल यू कैन गिव अ ट्रायल ऑफ अ ड्रग नोन एज, फार्मा का क्वेश्चन आ सकता है, निटिसिनोन. निटिसिनोन कैन बी ट्राइड, बट विटामिन सी इज एडेड इन वर्चुअली ऑल ऑफ दीज पेशेंट्स. राइट, लेट्स मूव फर्दर. लेट्स टॉक अबाउट सिमिलर क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन 2020. तो अगर ध्यान से देखो 22 में रिपीट हुआ क्वेश्चन, एंड दैट इज वाई repeat questions, FMG questions, past papers are so important. They tell you direction क्या पढ़ना है and they also give you direct questions with minor changes sometimes. So mother notices child के turn diaper हो गए, likely suspicion, yes, alkaptonuria, easy one. Identify the enzyme deficient in von गिरकिस disease, that is type 1 glycogen disease. इस बार का FMG का January 23 का question है. It is glucose 6 phosphatase, which is the answer, right? What are the things about von गिरकिस disease that you should know? Von गिरकिस disease, it is type 1 glycogen storage disorder. It is type 1 glycogen storage disorder. Second point, the deficiency of the enzyme. This is the deficient enzyme. So deficient enzyme कौन सा है? It is glucose 6 phosphatase. Third thing, von गिरकिस disease. These patients, the age of presentation is 2 to 4 months. 2 to 4 month onwards, the disease comes to presentation. How do they present? They have hepatomegaly. They have renomegaly. किडनी भी बड़ा हो जाता है, तो पूछ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम लिवर विच अदर ऑर्गन इज इन्वॉल्व? इट इज रीनल, किडनीज विच आर एनलार्ज्ड. हेपेटोमेगली क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ग्लाइकोजन डिपोजिशन. नॉर्मल ग्लाइकोजन वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, टूट नहीं पाता, तो लिवर में इकट्ठा होता रहता है. इट कीप्स ऑन एक्युमुलेटिंग इन द लिवर. दे ऑल्सो हैव डॉल लाइक फेस. देखो मेडिकल साइंस में ना आप जो चीज़ पढ़ते हैं वो हिंदी एंड उर्दू इट अपीयर्स लाइक आप तारीफ कर रहे हैं. यहाँ पर ये सिंड्रोमिक होता है. आप किसी को बोलते हैं तुम तो गुड़िया जैसी दिखती हो, तो द गर्ल विल बी वेरी हैप्पी. अच्छा मेरी तारीफ कर रहा है. यू से इन द सेम, यू लुक लाइक अ डॉल, यू हैव अ डॉल लाइक फेशिस. It is a patient who is a von गिरकिस disease patient, right? So all these terminologies, the language you are using is very important. The same thing when translated can have a totally different meaning. So doll-like facies, they can have lactic acidosis. ये features पूछे जाते हैं. All of the following are present except. So lactic acidosis, they have increased uric acid accumulation. So gout can develop in long-standing cases. And these patients also have increased serum triglycerides. They also have increased serum cholesterol. However, also remember that there is no enzyme replacement available.
अगर पूछें एग्जाम में एक्स्ट्रा एज पॉइंट कि एंजाइम रिप्लेसमेंट किसमें अवेलेबल है फॉर थेरेपी, इट इज अवेलेबल इन टाइप 2 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। उसका नाम क्या होता है? पॉम्पेज डिजीज। एंड पॉम्पेज डिजीज में प्रीडोमिनेंट कार्डियोवास्कुलर फीचर्स आते हैं। सो सीवीएस फीचर्स आर प्रेजेंट प्रीडोमिनेंटली इन दिस। सो ये अलग से आपका हाई यील्डिंग टॉपिक, हाई यील्डिंग पॉइंट हो सकता है। सो क्वेश्चन आंसर इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, राइट? Let's move further. Look at the question. An 8-year-old child presented with hepatomegaly, hypoglycemia. He was diagnosed with glucose 6 phosphatase deficiency. The cause of hepatomegaly in the child is, I just told you, it is a glycogen storage disorder, Born-Girkes disease, and there is glycogen accumulation is happening in the liver. Yes, Devajaya, frequent feeding and cornstarch diet is given, and usually we say कि every 4 to 6 hourly feeds need to be given. Cornstarch जो होता है वो slowly metabolize होता है. These days some artificial diets are also available, but Born-Girkes disease is not a good disease to happen. Next question. A child was born normally, developed mental retardation. Birth पे ठीक था, then developed mental retardation, blonde hair, white hair हो गए, and convulsion, seizures आ गए by 1 year of age. What is the most probable diagnosis? Old FMG question. Phenylketonuria. Remember that phenylketonuria is a condition which is autosomal recessive. There is deficiency of enzyme known as phenylalanine hydroxylase. Phenylalanine hydroxylase deficiency is there. These children are born normally, but within 1 year, in 1 year, they develop fair skin. इनका actually skin जो होता है वो fair होने लग जाता है with time. They develop blonde hair. They develop seizures. They develop developmental delay and mental retardation. They develop seizures and mental retardation, and they have a musty urine odor, which is another MCQ asked in FMG exam. Musty urine odor ये क्यों होती है? Because of phenyl acetate. Phenyl acetate or phenyl acetic acid is the reason, the metabolite which is secreted, right? So the likely diagnosis in the question is फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको प्लीज़ याद रखना। फिनाइल एसीटेट से होती है, फिनाइल पायरुवेट भी होता है, उससे नहीं होता, फिनाइल एसीटेट से होता है। और मेंटल रिटार्डेशन पूछे किससे होता है? ये फिनाइल एलेनिन से होता है, ये मेटाबोलाइट से नहीं होता, फिनाइल एलेनिन से होता है। सो व्हाट इज कॉजिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया पे आ गए। 2-year-old बॉय रिपोर्टेड टू पीएचसी, फीवर है, कफ है, चेस्ट इनड्रॉइंग है, रेस्पिरेटरी रेट इज 38 पर मिनट। 2-year-old बॉय में ये टेकिपनिया नहीं है। नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू IMCI WHO गाइडलाइंस इज। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम IMCI WHO निमोनिया का डायग्नोसिस पढ़ते हैं। लेट अस रिवाइज द IMCI WHO निमोनिया। इट सेज एनी चाइल्ड बिलो 5 years of age who has fever or respiratory symptom like cough, right? If has tachypnea और chest indrawing, दोनों में से कोई भी एक या दोनों, tachypnea और chest indrawing, the label is pneumonia. In these patients, you will start oral amoxicillin, that is oral amoxi will be given for 5 days, and every child started on oral amoxicillin, you will review in 48 hours. So diagnosis will be simple pneumonia. On the other hand, if the patient has any danger sign मैंने क्लास में अपने डिटेल में करे हैं, you can also have a look. अगर ये आपके नोट्स में मिसिंग है, you can ask me, I will share with you later. So due to paucity of time, I can't go into theory. So danger signs are multiple: malnutrition, convulsion, stridor at rest, lethargy, abnormal sleep, difficult to awake, inability to feed or drink, persistent vomiting, ये सब danger sign है। तो any danger sign होगा तो उसे बोलेंगे severe pneumonia. And in these patients, you will go for IV antibiotics given for 5 days. राइट? सो अब देखो इसके अंदर क्या है, पेशेंट में टेकिपनिया नहीं है बट चेस्ट इनड्रॉइंग है एंड देयर इज नो डेंजर साइन मेंशन, सो द लाइकली डायग्नोसिस इन द पेशेंट इज बी, दैट इज निमोनिया, एंड ट्रीटमेंट विद ओरल एंटीबायोटिक्स एंड रिव्यू इन 48 आवर, दैट इज द आंसर। सो जून 22 में आया है, 23 में भी आ सकता है। एंड लुक एट दिस क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन December 21। So 2-year-old child present with fever, tachypnea नहीं है, chest indrawing present है। What is the likely diagnosis and treatment? Again very similar, ये almost same question है, pneumonia, oral antibiotics and come back after 2 days। अब इसी क्वेश्चन में वो लिख दें कि बच्चे को कन्वल्शन भी हो रहा है, स्ट्राइडर भी आ रहा है, तो हो जाएगा डायग्नोसिस सीवियर निमोनिया और वहां पर आपको देना पड़ेगा एंटीबायोटिक।
अगर वो ऑप्शन नहीं है तो यू विल गिव फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक एंड रेफर टू द हायर सेंटर, दैट विल बिकम योर आंसर. लुक एट दिस क्वेश्चन, FMG जनवरी 23 का क्वेश्चन है. चाइल्ड हैविंग फीवर, कफ, राइनोरिया, रनिंग नोज, स्टफी नोज एंड कंजंक्टिवाइटिस, यू कैन सी इसकी आंखों से भी पानी निकल रहा है. डेवलप्ड अ मैकुलोपेपुलर रैश ऑन द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम फेस, व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस? वेरी इजी, इट इज मीजल्स. हाँ, व्हाई डू आई से एनी पेशेंट इज हैविंग मीजल? याद रख लो, whenever there will be fever along with 3C. What are 3C? Cough, coryza. Coryza क्या होता है? Runny stuffy nose and conjunctivitis. साथ में पेशेंट को आएगा oral lesions. The oral lesions are called as Koplik spots. राइस ग्रेन की तरह होते हैं Koplik spots. फर्स्ट कहां अपीयर होते हैं? They appear opposite the lower second molar tooth. उसके साथ में आएगा पेशेंट को नॉन इची रैश, नॉन इची मैकुलोपेपुलर रैश, फेस पे आएगा और वहां से ट्रंक पे जाएगा. सो इन दीज पेशेंट्स इफ सच अ प्रेजेंटेशन इज देयर, द लाइकली डायग्नोसिस इज गोइंग टू बी मीजल्स. मीजल्स का अदर नेम है रूबियोला. मीजल्स का अदर नेम इज रूबियोला, राइट. तो और इसके अलावा याद कर लो कि जब पेशेंट में स्लैब्ड चीक अपीयरेंस होगा, दोनों गालों पे चांटे पड़े हैं, ऐसा अपीयरेंस, ऐसा रैश आ रहा है, ये पास्ट FMG क्वेश्चन है, तो डायग्नोसिस विल बी एरिदीमा इन्फेक्शियोसम, जिसे पुराने टाइम में, इन ओल्डर टाइम्स, दिस वाज कॉल्ड एज फिफ्थ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय पार्वोवायरस B19. अगर क्वेश्चन बोले कि फीवर है, साथ में रैश है, एंड देर इज लिम्फेडिनोपैथी एंड देर आर स्पॉट्स नोन एज फोरशाइमर स्पॉट्स इन द माउथ, द लाइकली डायग्नोसिस विल बी rubella. If the question says fever along with itchy rash and the patient is having vesicles, the likely diagnosis is going to be varicella, that is chickenpox. तो ये मैंने clues दे दिए हैं. Please add these things to your notes. You are supposed to remember all of them. It's a quick fire revision that we are doing here. So let's move further. ओके, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल सेप्सिस वर्ल्ड वाइड और ओवरऑल क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल सेप्सिस वर्ल्ड वाइड इज, यस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस. सो वर्ल्ड के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज इज ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टिए. स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टिए फॉलोड बाय इकोलाई, फॉलोड बाय क्लेप्सियला. ये पूछ रहे हैं कॉजेस किसका? नियोनेटल सेप्सिस का. अगर बोलें कि इंडिया में क्या कॉमन कॉज है, इंडिया में क्लेप्सियला है, एसिनेटोबैक्टर नहीं है, नहीं है, नहीं है, राइट. ऑल द लेटेस्ट एविडेंस सेज नहीं है, क्लिनिकल प्रैक्टिस सेज नहीं है, ICU में होता है, कम्युनिटी में नहीं होता. सो क्लेप्सियला इज द मोस्ट कॉमन कॉज, फॉलोड बाय स्टैफ ऑरियस एंड फॉलोड बाय इकोलाई. सो दिस इज द लेटेस्ट लिस्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर. So Acinetobacter is not a common cause of neonatal sepsis in India, at least in the community. And you know that community sepsis हमेशा ज़्यादा होता है compared to a hospital sepsis, right? So answer to this question is, this question answer is group B streptococcus. इसी का similar question आया था जहाँ पर they said most common cause of neonatal sepsis in India. So the answer then becomes Klebsiella, right? और पूछो फंगस कौन सा है, तो कैंडिडा एल्बिकन्स ही होता है. वो इजी थिंग है, विच आई होप यू नो, इट इज ऑलरेडी इन योर नोट्स. वैक्सीन MCQs जल्दी से करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर गिवन एट बर्थ? जून 22 में आया था, बड़ा सिंपल है, इजी वन. BCG देते हैं, OPV देते हैं, DPT नहीं देते, हेपेटाइटिस B देते हैं. सो BCG, OPV, हेपेटाइटिस B. डायरेक्ट क्वेश्चन टेकन फ्रॉम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देखो, याद करना पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट्स देयर, यू विल हैव टू रिमेंबर इट, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग मेमोरी. फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस B वैक्सीन अभी पढ़ा हमने. ये देखो, एक ही पेपर में दो क्वेश्चन थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, सो वेरी सिमिलर टू ईच अदर. सो जून 22 फर्स्ट डोज कब देते हैं? ऑब्वियसली बर्थ पे देते हैं. सो बर्थ के ऊपर फर्स्ट डोज इज ऑलवेज गिवन. सो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ये है आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. तो you can take a snapshot, it will be there in your notes also. In case you are missing out, add these points to your notes. Suppose a rare question आ जाए, कोई difficult question आ जाए, तो आपने याद रखना है, just remember this, that 3 vaccines are never given. 3 vaccines are never given beyond 1 year of age if missed earlier. अगर पहले मिस हो गया तो दोबारा नहीं देना, फिर 1 year के बाद नहीं देना है. BCG,
पेंटावेलेंट एंड रोटावायरस। पेंटावेलेंट की जगह आप डीपीटी दे सकते हैं, बट बीसीजी पेंटावेलेंट रोटावायरस नहीं देना है। व्हाट इट मीन्स इज, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू इन द एग्जाम। लिसन टू द क्वेश्चन। 13-month अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड कम्स टू यू, विच वैक्सीन नीड्स टू बी गिवन। तो 4 ऑप्शन होंगे, जिस ऑप्शन में वट एवर ऑप्शन इज हैविंग बीसीजी विल नॉट बी द आंसर, whatever option has pentavalent will not be the answer, whatever option has rotavirus will not be the answer, the remaining option will be your answer. Got it? Quick fire sure way to get the answer correct if your scenario based question is asked. देखो 2 तरीके होते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के। एक होता है आइडियल वे, आइडियल वे सब कुछ जानना चाहिए और फिर आप उसको करो। दूसरा होता है आप पढ़ो बट स्मार्टली यू ऑल्सो मेक सम जनरलाइजेशन सो दैट दे हेल्प यू इन द एग्जाम. Exams are all about, finding that balance between ideal and practical way. Let's move further. Pediatric CVS MCQs in the recent exams. Which drug is given for the closure of PDA? June 2021 का question है. Which drug is given for the closure of RDA? अब बताओ, आसान है. For PDA closure, we give prostaglandin inhibitors, either indomethacin or ibuprofen. अगर दोनों ऑप्शन में होंगे, बेटर आंसर विल बी ibuprofen because that is now preferred drug. But in general, the answer is indomethacin because ibuprofen mentioned नहीं है. Paracetamol is not recommended for the closure of PTA, right? कुछ लोग देते हैं, but देना is not ideal. ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में होती हैं, but indomethacin and ibuprofen are the only drugs that you need to remember. So indomethacin याद कर लो. For closure of PDA, you give ibuprofen, which is favored, followed by indomethacin, and no other drug should be given. और कितने दिन के लिए देते हैं? 3-day regime देते हैं इसका. This is the additional thing that you can add to your notes. Let's move further. Continuous murmur is heard in FMG question 2018. Continuous murmur with a machinery character is heard in patent ductus arteriosus, right? VSD के अंदर होता है pan systolic murmur. ASD के अंदर होता है no shunt murmur. However, flow murmurs may sometimes be heard. Tetralogy of Fallot के अंदर no shunt murmur, तो VSD का murmur नहीं होता. However, they may have a pulmonary ejection systolic murmur. So ये points है जो आप add कर सकते हो. Quick revision points, right? So PDA will have the continuous murmur with a machinery character. Let's go further. थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ गया है. मेरा अगला सेशन मुझे थोड़ा डिले करना पड़ेगा, बट आई होप यू डोंट माइंड, राइट? बिकॉज जब मैंने बनाया था कलेक्शन, आई वांटेड टू कवर मैक्सिमम पॉइंट्स, सो लेट्स पुश आवरसेल्व्स अ बिट. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो एक्सेप्ट. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो एक्सेप्ट. सो ये पूछ रहे हैं बेसिकली उसके कॉम्पोनेंट क्या होते हैं. तो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो के कॉम्पोनेंट क्या होते हैं आप बताओ मुझे. फर्स्ट VSD होता है, लार्ज VSD. सेकेंड, when we were kids, we used to remember pulmonary stenosis. Now we know it is not at the level of pulmonary valve. There is a narrowing happening below the pulmonary valve. It is called as infundibular stenosis, but more commonly it is called as subpulmonary stenosis. In bracket you can write, it is also called as infundibular stenosis. And this stenosis is responsible for the reversal of shunt, that is right to left shunt. So this is the most important component. If they ask you in exam, most important component क्या है? For severity of stenosis, it is subpulmonary stenosis. Third component is overriding of aorta. Overriding of aorta. And fourth component is RV hypertrophy. RV hypertrophy. देखो अगर आपने अभी pediatrics revise नहीं किया है, so you may find some of the things over or intimidating. But if you have done, this will be a good revision tool. If you are a initial FMG student, I would advise कि आप अपने notes को पढ़ो एक बार, then come back to this session. But irrespective of which stage you are, close to the exam, this points which I am discussing, they will come handy, right? So odd one out क्या है? ASD. ASD नहीं होता. ASD is not a component of TOF, it is VSD. ASD is a component of pentology of Fallot. एक condition होती है pentology of Fallot. उसमें होता है TOF के यही सारे component along with ASD, right? So answer to this question is B. अब ये 4 images हैं. They can be asked to you in the exam. They can be asked to you in the exam, right? क्या क्या है? इनको स्पॉटर की तरह करेंगे. पहला इमेज देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि बूट पड़ा हुआ है किसी का. ये बूट की तरह शेप है हार्ट का. So this is the Coeur and Sabot French word which stands for boot shaped heart.
boot shaped heart, typically seen in patients of tetralogy of Fallot. दूसरे में देखो, अगर if I try to mark the cardiac shadow, isn't it looking like a egg is kept? So this is called as egg shaped heart or egg on string appearance or egg on side appearance, typically seen in patients with TGA. Variety of TGA known as dextroposed TGA. Third variety, इसका image कैसा लग रहा है? If you make out, it is looking something like this. So this is the so-called figure of 8 appearance, also called as cottage loaf appearance. किसी ने बोला नहीं ये तो snowman जैसा लग रहा है, so snowman appearance, typically seen in patients with supracardiac TAPVC. TAPVC को TAPVR भी लिखते हैं, वो सेम चीज़ होते हैं, they are the same entity. एंड फोर्थ वैरायटी, अब इसमें ध्यान से देखो, अब मैं मार्क करने लगा हूँ, यहाँ पर देखो ये आया एओर्टा की एक इंडेंटेशन, एक दूसरी आई और बीच में ये ब्लॉक आ गया, तो ऐसा नहीं लग रहा कि 3 का इमेज बन रहा है, सो ये ऐसा लग रहा है ना 3 बन रहा है. सो प्री एंड पोस्ट स्टेनोटिक डायलिटेशन ऑफ द एओर्टा इज हैपनिंग, सो दिस इज व्हाट यू कॉल एज 3 साइन. सो दिस इज द 3 साइन एंड 3 साइन विल बी सीन इन पेशेंट्स ऑफ coarctation of aorta. It will be seen in coarctation of aorta. So ये 4 potential visuals हैं which you must not get wrong. I hope you will be benefiting out of it. So let's move further. Further increase करेंगे speed. Almost हमारा खत्म होने वाला है, so don't worry. Another 5-7 minutes and we'll be done. A child presents with short stature. FMG January का question है. The child has no abnormality. His bone age is equal to the chronological age. What is the likely diagnosis? अब इसको कैसे solve करना है? इसके लिए again हम एक छोटा सा flow chart बनाते हैं. Now, any child who has height for age below 3rd centile, जब आप when you plot on a chart, or height for age below -2 standard deviation, if it is a different chart being used, हम कहते हैं the patient is having short stature. Short stature can be of 2 types. It can be physiological and it can be pathological. You're welcome, Modi ji. You're welcome, Modi ji. So pathological, right? Physiological जो होता है, these children have a normal height velocity, also called as normal growth velocity. अगर randomly you have come across this, it's an indicator that the forces of nature are guiding you in the right direction. कि और पढ़ो और revise करो and you can ask the doubts whenever you have. Pathological is reduced growth velocity. राइट, पैथोलॉजिकल के अंदर आपके सारे वो लंबे लंबे कॉजेज आ जाएंगे, जैसे कि एंडोक्राइन डिफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल कॉज, एंकोंड्रोप्लेजिया, ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा सिंड्रोम, सब कुछ उसमें आ जाएगा. फिजियोलॉजिकल के 2 वैरायटीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले इन ग्रोथ एंड फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर. कॉन्स्टिट्यूशनल डिले इन ग्रोथ जो होता है ये सबसे कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन वैरायटी इज दिस. इसके अंदर एक तो होगा हिस्ट्री ऑफ डिलेड प्यूबर्टी, तो जहां पर भी एमसीक्यू बोले डिलेड प्यूबर्टी वो ये है, और इसमें होगा शॉर्ट स्टेचर इन फैमिली, तो पापा मम्मी में से कोई एक या दोनों, दे विल बी शॉर्ट इन हाइट. दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले के अंदर क्रोनोलॉजिकल एज कॉरेस्पॉन्ड्स इज ग्रेटर देन बोन एज, बट बोन एज एंड हाइट एज आर कॉरेस्पॉन्डिंग. ये अब डिफिकल्ट कंसेप्ट्स हैं जिसका हमारे पास टाइम नहीं है, कभी टाइम मिलेगा, कभी हम मिलेंगे दोबारा तो वी विल डिस्कस. 3 तरह की एजेस होती हैं, क्रोनोलॉजिकल एज, एक्चुअल एज, बोन एज अकॉर्डिंग टू दी बोन स्केलेटल मैच्योरिटी, एंड हाइट एज इज कि उसका हाइट किस एज को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. इन दिस पेशेंट्स क्रोनोलॉजिकल एज आगे चलता है, बोन एज और हाइट एज पीछे चलते हैं, लेकिन बोन एज हाइट एज आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर. इन फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर देयर इज नो डिलेड प्यूबर्टी एंड दीज आर द पेशेंट्स इन whom chronological age will be corresponding to bone age and both of them will be exceeding the height age. अब ये आपने याद कर लेने ये दोनों वैल्यूज, और इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है. हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? वेरी इजीली. लुक एट दिस, बोन एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज, तो बोन एज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज किसमें है? फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर के अंदर है, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी. राइट, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी. So it's a tough question, it's a tough topic, but these are the points which will come handy, they will help you in solving the question. Let's move further. FMG January 23 MCQ है, identify the condition shown in this image. ये क्या दिख रहा है आपको? Can you see this patient is having knock knee,
also known as genu valgum. And which is the entity, which is the vitamin deficiency associated with genu valgum? It is seen in rickets, which occurs due to vitamin D deficiency. Vitamin D deficiency. Exact options नहीं थे मेरे पास, so I just took it up here. So ये दो images हैं. This variety is known as genu varum, also known as bow legs, and this is known as genu valgum, also known as knock knee. देखो नीज यहां पर नॉक कर रही हैं, यहां पर सेपरेटेड हैं. रम इज अ एल्कोहल, तो रम पीने पे क्या होता है? रम पीने पे योर लेग्स आर वाइड बेस्ड गेट. सो रिमेंबर दैट वैरम इज बो लेग्स एंड वेलगम इज गम विल कॉज द नीज टू स्टिक टुगेदर. सो गम से नीज जुड़ जाती हैं, सो नॉक नीज आर प्रोड्यूस्ड. Stupid way to remember the fact. So genu varum, genu valgum both can be seen in a patient of rickets. Let's move further. FMG January question, clinical case of sunflower cataracts and Kesher Fleischer rings in the cornea of the eye. तो Kesher Fleischer rings दिख रही हैं, they are a copper deposition in a ring like pattern around the eyes. And second, you can find a sunflower cataract. This is the so-called sunflower cataract which is present. So they occur due to deposition of which mineral? Yes, the patient is having Wilson's disease. The patient is having Wilson's disease. The gene mutation here is ATP7B gene mutation, and it occurs due to copper deposition. So copper deposition is responsible for Wilson's disease. If you have time and if you want to read a high yielding topic which is relevant for pediatrics, medicine, not only in FMG but also for future exam, and if future next comes, I would advise Wilson disease को अच्छे से पढ़ लो, डिटेल में पढ़ो, हमेशा काम आएगा. If you are good in this topic, it will always help you. It is like, keeping 1,000 rupees for emergency use somewhere. When you are running short on cash, it will come handy. This is one topic. Among other topics, this is one topic. That is my advice. You'll always thank me for this. So Wilson disease will always be asked in every entrance exam in one way or the other till you are giving entrance exam. Super specialty पे पहुंचोगे ना आज से 7-10 साल बाद, वहां पर भी ये काम आएगा. Moving further, FMG January question, clinical case of meningitis was asked. Mentioned facts were weight loss, hilar lymphadenopathy, CSF में reduced glucose था and lymphocytic predominance था. What is the likely diagnosis? Tubercular meningitis. ये क्यों मैंने tubercular meningitis बोला? देखो पहले तो weight loss हो रहा है, जो कि which will not be there in a bacterial cause. Hilar lymphadenopathy, again you know that on chest X-ray hilar lymphadenopathy or in the lungs suggestive of one of the DDs TB. Thirdly, reduced glucose, TB and pyogenic meningitis, bacterial meningitis दोनों में हो सकता है, but lymphocytic predominance is seen in tubercular. Neutrophil होता है pyogenic के अंदर. So let's make a table. This is a very very important table that we need to revise. So मेरे साथ जल्दी से भरो इसको. ये बच्चों की बात हो रही है. meningitis. Normal CSFs. How many cells? 0 to 5 cells. All of them are lymphocytes. CSF protein 20 to 40 milligram per deciliter. CSF glucose 50 to 70 milligram per deciliter. Normal CSF is clear, normal CSF is sterile. Acute pyogenic meningitis 100 to 10,000, but कौन से सेल मिलते हैं? Neutrophils are found. दूसरा tubercular meningitis में कौन से सेल? 100 to 1000, less than that, but lymphocytes are found. And aseptic meningitis में lymphocyte मिलते हैं, but the cell count is only 50 to 100 and they are also lymphocytes, right? फिर CSF protein की बात करते हैं. CSF protein is elevated here, modestly elevated, so you will find 100 to 500. Tubercular में significantly elevated 100 to 1000, even 2000 milligram per deciliter can also occur. तो बहुत high elevation tubercular में होता है, and here it is a modest elevation 50 to 200. CSF ग्लूकोज रिड्यूस हो जाता है इसमें लेस देन 40, यहाँ भी रिड्यूस हो जाता है लेस देन 40, बट यहाँ पर नॉर्मल CSF ग्लूकोज इज फाउंड. सो रेज सेल रेज प्रोटीन नॉर्मल CSF ग्लूकोज उसमें रिड्यूस था, तो ये तो रूल आउट हो गया. एसेप्टिक इज कॉज्ड बाय वायरल मेनिंजाइटिस, राइट? एंड एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में आपका क्लियर हो सकता है CSF और टर्बिड हो सकता है. इन ट्यूबरकुलर देयर कैन बी पेलिकल और कॉब वेब फॉर्मेशन. एसेप्टिक मेनिंजाइटिस में कल्चर इज ऑलवेज स्टेराइल. कल्चर इज ऑलवेज स्टेराइल. ये टेबल याद कर लो, बस स्नैपशॉट ले लो इसका, ये बहुत जगह काम आएगा.
हर साल ये भी विल्सन डिजीज की तरह बार बार रिसाइकल होता रहता है. इट कीप्स ऑन रिसाइकलिंग एंड it is very frequently asked in your entrance exams, right? Let's move further. What is the most common seizure disorder in the age group up to 5 years? So remember, in up to 5 years of age, most common are febrile seizures. Febrile seizure is not an epilepsy. Fever के साथ seizure आता है. After 5 to 6 year अपने आप आना बंद हो जाता है. Why it happens we do not know. There is a positive family history. 8-year-old child presents with is it coming? Am I audible now? Please confirm. Okay. Okay, fine. Thank you. Thank you for waiting. So मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ये जो लिखा है रैपिड फायर वन लाइनर, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल सीजर इज एस्फिक्सिया और हाइपोक्सिक इस्चीमिक एनकेफ्लोपैथी. Which vitamin deficiency causes neonatal seizure? B6 या pyridoxine, because inhibitory neurotransmitter नहीं बनते. Drug of choice in neonatal seizure is phenobarbital. If the question says patient is having vacant staring look, देख नहीं रहा, blink नहीं कर रहा, seizure आ रहा है, answer will be absent seizure. अगर बोले सलाम अटैक आ रहा है, सलाम अटैक मतलब there will be jerks of head and neck like this, as if a child is doing salam. In a infant with low IQ, it will be West syndrome. In West syndrome, drug of choice is ACTH. However, drug of choice in tuberous sclerosis will be vigabatrin. Or any patients के अंदर, if you try to do EEG, you will find hips arrhythmia as the pattern.
सो इसके ऊपर ऑलरेडी पास्ट FMG क्वेश्चंस हैं, बट वो थोड़े पुराने थे, सो आई डिड नॉट टेक देम, राइट. सो नेक्स्ट, व्हेन डज हैंडेडनेस गेट एस्टैब्लिश्ड? रिसेंट क्वेश्चन है FMG का. इट इज 3 years पे आता है, जो द क्लोजेस्ट आंसर इज 36 to 40 months. डेवलपमेंट माइलस्टोन डिटेल में पढ़ना है, वट एवर सोर्स यू आर फॉलोइंग. देर आर फ्यू पॉइंट्स विच आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ग्रिप से रिलेटेड. सो बाई डेक्स्ट्रस ग्रिप कब आती है, बाई डेक्स्ट्रस ग्रेस्प कब आता है, इट कम्स एट 4 months. यूनिडेक्स्ट्रस ग्रेस्प कब आता है, कम्स एट 6 months. पामर ग्रेस्प कब आता है? सी, पामर ग्रेस्प एक रिफ्लेक्स भी होता है, दैट इज सेपरेट. पामर ग्रेस्प एज अ माइलस्टोन, इट कम्स एट 7 months. Pincer grasp comes at, immature one comes at 9 months, mature one comes at 12 months. Mature one comes at 12 months, right? And handedness gets established at 3 years. So, a grip and usage of grip से related points हैं, which are very, very important for your exam. So, you can add these to your notes. Let's move further. Neonate delivered at term was limp and not breathing. Limp का मतलब होता है poor muscle tone, flaccid baby and not breathing. What is the immediate next step in management? FMG question 22. The answer to this question is start bag and mask ventilation. The word CPR is not used in newborn. Newborn में हम करते हैं neonatal resuscitation program NRP. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इफ द न्यूबॉर्न इज नॉट ब्रीदिंग, स्टार्ट विद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विच कैन बी गिवन बाय बैग एंड मास्क वेंटिलेशन. लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट द फ्लो चार्ट सेज. सो ये है, जैसे ही बर्थ हुआ, यू आस्क 3 questions टू योर सेल्फ. इज द चाइल्ड हैविंग टर्म gestation? इज देयर गुड मसल टोन और ब्रीदिंग और क्राइंग और नॉट? इफ द आंसर ऑफ एनी ऑफ देम इज नो, कि ब्रीद नहीं कर रहा, यू विल डू इनिशियल स्टेप्स. इनिशियल स्टेप्स में हम क्या करते हैं, बच्चे को स्टेबिलाइज करते हैं. वार्मथ, ड्राई, स्टिमुलेट, पोजिशन द एयरवे एंड सक्शन आउट एनी क्लॉट इफ इट इज देयर इन द नोज एंड माउथ ऑफ द चाइल्ड. एंड इफ द चाइल्ड इज स्टिल नॉट इंप्रूविंग एंड हार्ट रेट एंड ब्रेडिकार्डिया इज देयर, apnea and bradycardia is there, you will start with PPV. PPV stands for positive pressure ventilation, and positive pressure ventilation is more frequently given by bag and mask ventilation. Among the options given to you, अकेला देखो बच्चा ब्रीथ नहीं कर रहा, तो ऑक्सीजन देके कोई फायदा नहीं होगा. लुक ऐसे देखो ना, ऑक्सीजन देने से क्या फायदा होगा जब सांस ही नहीं ले रहा. अम्बिलिकल वेन कैथेटराइजेशन तो ड्रग के लिए होता है, ड्रग बाद में आएगा, पहले जान बचाए, सांस तो ले. एंड CPR जो होता है, CPR में हम कंप्रेशन देते हैं. इन न्यूबॉर्न वी फर्स्ट वेंटिलेट, देन वी गिव चेस्ट कंप्रेशन इफ द पेशेंट इज नॉट इंप्रूविंग. सो दैट इज नॉट द आंसर. So even if you don't know the answer, still you can rule out the option and reach the correct answer, that is start bag and mask ventilation, right? So इसके अंदर आपके कुछ one liners आ सकते हैं एग्जाम में. I would advise कि bag and mask ventilation मैंने डिटेल में डिस्कस किया है. You can catch hold of those notes and catch hold of that video and see it in details, but it is a high yielding topic and it requires 30 to 35 minutes of focused reading. Also remember that in neonatal resuscitation program, NRP, newborn के resuscitation program में sequence क्या होता है? इनिशियल स्टेप करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इफ द क्वेश्चन सेज इन FMG एग्जाम, एक न्यूबॉर्न है, वो ये नहीं कर रहा, इंप्रूव नहीं हो रहा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट. इनिशियल स्टेप करेंगे, उसके बाद PPV करेंगे यूजिंग बैग एंड मास्क वेंटिलेशन. आफ्टर दैट यू विल टेक वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स. उसके लिए एक निमोनिक होता है MR सोपा. उसके बाद यू विल इंटूबेट एंड गिव PPV. Along with that, you will give chest compressions, and after that, you will give epinephrine, that is adrenaline, via umbilical vein catheterization. ये sequence है जो I'm putting a star. If the question says this has been done, patient is not improving, what is the next step in the management, right? Yes, Devajaya has very rightly mentioned absolute contraindication for bag and mask is congenital diaphragmatic hernia. ये पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, you already know about it. So infant of diabetic mother is at risk of development of which of the following? Infant of diabetic mother, mother में diabetes है, तो baby में होगा high glucose which will cause high insulin development and that will cause hypoglycemia in the child. So infant, post infancy, the child will develop hypoglycemia. Why? If there is maternal diabetes, ऐसे समझो इसको, maternal diabetes mellitus है, so that will cause fetal hyperglycemia, क्योंकि blood glucose transmit हो जाएगा. Fetal hyperglycemia will cause release of more insulin and more insulin postnatally after birth. It will cause hypoglycemia in the child.
So answer to this question is hypoglycemia, right? Infant or diabetic mother again is a high yielding topic. So try to read in details. It's a big topic. So lot of 20-31 liner bante hain. So add them to your notes. Next question, female newborn is found to have ambiguous genitalia. Workup shows very high 17-hydroxyprogesterone and progesterone levels. Which enzyme deficiency is responsible? The answer to this question is A, 21-hydroxylase. Why? 21-hydroxylase deficiency जो है, this is the most common cause of CAH. CAH is congenital adrenal hyperplasia. It produces normal genitalia in males but produces ambiguous genitalia in case of females. And all babies, they are found to have reduced glucose, that is hypoglycemia. They are found to have decreased sodium, they are found to have increased potassium, and they are found to have shock, that is hypotension in these patients. In all babies, the screening test we follow is elevated 17-hydroxyprogesterone levels. 17-hydroxyprogesterone levels we look for, and treatment is in the form of hydrocortisone, right? So इसमें क्या है, देखो female with ambiguous genitalia mention हो गया, elevated 17-hydroxyprogesterone which is a screening test. So the likely enzyme deficiency is 21-hydroxylase. याद कर लो कि जो आपका बाकी फॉर्म्स हैं उनके अंदर different variations होते हैं. So you need to remember for each individual form. 21-hydroxylase is the one which is very frequently asked in the exam of FMG because it is also the most common one, right? लेट्स मूव फर्दर एंड यहीं पर दिख रहा है हमें, देखो 21 हाइड्रोक्सिलेज अगर डेफिशिएंट हो गया, यहाँ ब्लॉक लग गया, तो व्हाट विल हैपन, प्रोजेस्ट्रॉन और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल बढ़ जाएंगे, एंड दिस इज व्हाई प्रोजेस्ट्रॉन एंड 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्स आर एलिवेटेड इन दीज पेशेंट्स, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर? WHO ने एक एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर दिया है, उसको याद करना है. देयर इज नो टेक्निकल पॉइंट इन दिस. एनी चाइल्ड हु इज बोर्न, इमीडिएटली यू नीड टू डू सम एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर. व्हाट आर द कंपोनेंट्स? लेट अस रिवाइज देम. तो सबसे पहले इमीडिएट केयर एट बर्थ है, उसमें हम डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग बाय 30 to 60 सेकेंड करेंगे. अलॉन्ग विद दैट बच्चे को ड्राई करेंगे सो दैट देयर इज नो लॉस ऑफ हीट लीडिंग टू इवेपोरेशन. ब्रीदिंग असेस करेंगे, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करेंगे, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग देंगे. अलॉन्ग विद दैट थर्मल केयर विल बी डन, रिससिटेशन इफ नीडेड, ब्रेस्ट मिल्क के लिए सपोर्ट करेंगे, इन्फेक्शन प्रिवेंट करेंगे, नर्चरिंग केयर देंगे. यू विल असेस द चाइल्ड फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स, डेंजर साइंस के लिए वॉच आउट करेंगे, एंड यू विल रेफर द चाइल्ड इन केस टाइमली इन केस इफ देयर इज एनी रीजन. अब इसी को पढ़ने के बाद इसको याद करना पड़ेगा आपको. लुक एट द ऑप्शंस. ड्राइंग एंड क्लीनिंग द बेबी किया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग किया जाता है, टेम्परेचर मेंटेनेंस, थर्मल केयर किया जाता है. ईयर केयर का कोई रोल नहीं है. ईयर को सिर्फ देखते हैं, वी जस्ट सी कि ईयर इज नॉर्मल और नॉट, दैट्स ऑल. नो स्पेशल ईयर केयर, क्लीनिंग ऑफ द ईयर दैट इज नीडेड. इवन बाय कॉमन सेंस ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन कि देखो आंख साफ किया, नाक साफ किया, मुंह साफ किया, ठीक है, कान की सफाई कोई नहीं करता. नोबडी पुट्स अ जॉनसन बर्ड इन द आई, इन द ईयर ऑफ द चाइल्ड, राइट? Try to think rationally and you will still be reaching the correct answer. So answer to this question is A, that is ear care. We are almost at the end of the discussion. So child presents with history of protracted vomiting. Protracted vomiting का मतलब होता है severe vomiting the patient is having. So repeated vomitings the child is having. What will it cause? Try to think. The child is having repeated vomiting. Due to protracted or repeated vomiting, there will be loss of gastric juice. Gastric juice has hydrochloric acid in it, and so there will be loss of acid from the body, and loss of acid will lead to development of alkalosis in the body. So that is what you call as metabolic alkalosis will develop, right? So answer to this question is B, that is metabolic alkalosis. Remember कि vomiting के patients में बच्चे के अंदर develop होता है alkalosis, और अगर बोलें कि डायरिया चल रहा है बच्चे के अंदर, severe डायरिया, वायरल डायरिया, तो बच्चे में develop होता है acidosis. Both are important because डायरिया में बाइकार्बोनेट का लॉस होता है into the डायरिया fluid. So body में excess हो जाता है acid का, right? What is given in an irritable child with some dehydration? अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we need to go into the WHO classification of dehydration. This is the WHO classification. The child is irritable, right? Irritable
feature is it is a feature of some dehydration. Some dehydration में हम follow करते हैं plan B. And what do we follow in plan B? We give WHO recommended ORS. Plan A, where there is no dehydration, we give home based fluids. And in plan C, where there is severe dehydration, we give IV fluids in the patient. Which is the best IV fluid? It is Ringer's lactate which is given. So ये पूरा table है that you are supposed to remember, very important from exam point of view. Please add it to your notes and look at the question now. Child is irritable with having some dehydration. What you will give? You will give ORS in the child. ORS will be given in the child, right? 5-year-old child presents to you with diarrhea but no dehydration. Dehydration नहीं है तो maintenance fluid देंगे. Weight is 17 kg. What is the total daily fluid requirement in this child? Now this question is basically asking you maintenance fluid कितना देना है? How much is the maintenance fluid to be given? For daily maintenance fluid, there is a formula which is called as Holiday-Sager method. Holiday-Sager method. This says कि ये बच्चे के weight पे depend करता है. Suppose if the weight of the child is less than 10 kg, the total 24-hour fluid requirement is 100 ml per kg. If it is 10 to 20 kg, we give 1000 plus 50 ml per kg for every weight greater than 10 kg. And if it is more than 20 kg, the formula is 1500 plus 20 ml per kg for every weight greater than 20 kg. अब इस पे अप्लाई करके देखते हैं. वेट कितना है? 17 kg. 17 का मतलब यहाँ आएगा तो 17 में कितना फ्लूइड देना है? 1000 प्लस हाउ मच वेट इज अबव 10 kg? 7 kg. तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 7, 350. So 1000 plus 350, that is 1350 will be your answer. 1350 ml will be your answer, right? So ये फॉर्मूला याद कर लो. ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है. दे कैन रिपीट द क्वेश्चन. वो डायरिया उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, राइट? 6-year-old boy presents with heme arthrosis of the left knee joint after a trivial injury. What is the likely diagnosis? Bleeding into joints and bleeding into muscles is a feature of hemophilia. And which is the hemophilia mentioned in this question? It is D, which is factor A deficiency. Remember, whenever there is bleeding child, ये फ्लो चार्ट बना रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लीडिंग चाइल्ड, क्वेश्चन विल से पेटिके, परप्यूरे, म्यूकोजल ब्लीड, ENT bleed, but no joint bleed. Think of platelet disorder, platelet cause of bleeding. Whereas if the patient is having deep bleeds and ecchymosis, patient is having heme arthrosis. Heme arthrosis का मतलब होता है bleeding in the joint bleed, or the patient is having muscle hematoma, then you should suspect a clotting factor defect. In a young child, what will be the most common clotting factor defect? It will be hemophilia. So hemophilia A and B. Hemophilia show X-linked recessive inheritance, more common in boys. Hemophilia A is caused by factor 8 deficiency, B is caused by factor 9 deficiency, right? So answer to this question is D, that is factor 8 deficiency. कुछ भी miss out हुआ है, you can always ask me again. Neonate, December 2020 question. Neonate presented with respiratory distress, scaphoid abdomen मिला, board shaped abdomen मिला. Look at the X-ray. X-ray में क्या दिख रहा है? Left side पे herniation of bowel content हो रहा है. Can you see these air-filled loops which are coming and they are causing mediastinal shift of heart cardiac shadow to the opposite side? The diagnosis is congenital diaphragmatic hernia. Remember, कोई भी newborn where they mention scaphoid abdomen and chest X-ray shows left-sided herniation because CDH always occurs on left side. So left-sided herniation, you will find bowel loops on the left side and cardiac shadows being pushed to the center or to the right. You will think of congenital diaphragmatic hernia. It is absolute contraindication for bag and mask ventilation. And in these patients, the first step in management is always intubate the patient. So intubation will always be the first step in management, followed by nasogastric compression and after stabilization surgery करेंगे. Immediate surgery is never done in these patients. 10-year-old child allergic to wheat based products. So wheat allergy है. He gets abdominal pain, distension every time he gets wheat. He has anti-endomycin antibodies positive in his blood. What is the likely diagnosis? Anti-endomycin antibody, anti-tissue transglutaminase antibody positive in a patient of celiac disease, also called as celiac sprue. Celiac sprue is also called as celiac disease.
These patients are wheat allergic. They are associated with HLA, B20, HLA, DQ2 positivity. They have increased levels of IgA anti-TTG and they have IgA anti-endomysial antibodies. The only treatment in them is lifelong wheat restriction in the diet. Lifelong wheat restriction in the diet, right? So, gluten, it is also called as, other name of this is gluten sensitive enteropathy. Gluten is the component to which the patient is allergic. This is the other name for celiac disease or celiac sprue, right? And in the end, last में आ गया, syndrome MCQs in recent exam. Couple is trying to have child for past 2 years. After multiple unsuccessful trial, they went for respective examination. फीमेल तो नॉर्मल थी, मेल में हमें दिखा गायनेकोमेस्टिया, तो मेल में प्रॉब्लम था, तो मेल वाज इनफर्टाइल, दैट इज व्हाई द कपल वाज नॉट हैविंग किड्स. ही हैड स्मॉल टेस्टिस, स्कैंटी प्यूबिक हेयर, और पास्ट में वो एंटी सोशल बिहेवियर भी शो करता था ड्यूरिंग स्कूल डेज. व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस? सो टॉल मेल, गायनेकोमेस्टिया, इनफर्टिलिटी, स्मॉल टेस्टिस, scanty pubic hair, behavioral abnormality, learning disability, it is all fitting into a diagnosis of Klinefelter syndrome in the patient. Yes, Klinefelter syndrome. सब में antisocial behavior नहीं होता, but there are certain variants जहाँ पर additional Y chromosome होता है. Those are the variants which have antisocial behavior common. So, Klinefelter syndrome, this is the photo, this is the image. So, you can find that frontal baldness, poor beard growth, narrow shoulders, wide hips. So, body like female and they have a small testis, they have long arms and legs. इनको कहते हैं यूनिकॉइड proportion. तो एग्जाम में एक बार पहले आया था, यूनिकॉइड proportion मिलता है, like a eunuch. They are found in patient of Klinefelter syndrome. So, unicoid proportions of body are found and all of them are found to be infertile, right? What is the likely diagnosis in the girl child having short stature and features and shown? Short stature है, साथ में क्या दिख रहा है? You can easily see there is webbed neck which is present in this girl, right? Webbed neck है. This girl is also having a low posterior hairline and you can find short fourth metatarsals on the feet. Hand में भी हो सकते हैं short fourth metacarpal. Everything fitting into a diagnosis of Turner syndrome, right? So, short stature, webbed neck, hypoplastic widely spaced nipples, low posterior hairline, coarctation of aorta, short fourth metacarpal and metatarsal, they all fit into the diagnosis of Turner's syndrome. They are all Turner syndrome. Most of you are answering it absolutely right, absolutely correctly. So, these are the correct features of Turner syndrome. The genotype is 45XO. These children are found to have short stature with height less than 145 centimeters. Low posterior hairline, webbed neck, heart-shaped face, coarctation, broad chest with widely spaced nipple, cubitus valgus, streak ovaries. Streak ovaries are very important. And extra edge point, FMG exam में पूछा जा चुका है. They also have increased risk of, please add to your notes, horseshoe kidney. Horseshoe kidney is also common. However, they are found to have a normal IQ. I personally know a Turner syndrome girl who is very, very smart. She is working in a multinational and she is a friend of my cousin. So, they have a normal IQ. Some of them can be really bright. All they have a problem is one X chromosome missing, and so the female characteristics will be usually less defined in them, right? Next question, neonate is detected to have facial abnormality, thymic hypoplasia, thymus नहीं बना तो T cell deficiency होगा, and tetralogy of Fallot, so heart disease होगा. These will be present in which of the following? It's a one-liner Dye-George syndrome. Dye-George syndrome arises due to deletions in 22q11.2. The features of Dye-George syndrome can be remembered by the mnemonic catch-22. In patients में क्या होता है? C stands for congenital heart disease, A stands for abnormal facies, T stands for thymic hypoplasia. Because of that, they will have T cell immunodeficiency. C again stands for cleft lip or cleft palate, and H stands for hypocalcemia.
because they also have decreased parathyroid levels because of parathyroid hypoplasia, and 22 is the chromosome which is involved. So these are the features, and they arise in these patients. There is hypoplasia of third, sometimes fourth pharyngeal pouches. So branchial arch development defect कहते हैं इसे. So this is also a past MCQ point. This is also a past MCQ point. Moving further, child presents with Lisch nodules on iris and multiple cafe-au-lait macules on the body. Father or grandfather may be same hai. What is the likely diagnosis and what is the inheritance? This child, yes, he is rightly having, this is the cafe-au-lait macule. These are the multiple Lisch nodules. So these are the cafe-au-lait macules. These are the Lisch nodules which are present on the iris. So the likely diagnosis in the patient is neurofibromatosis 1. So the likely diagnosis is NF1, and the patient is suffering from NF1. The diagnosis, it's a neurocutaneous disorder. तो कौन सा इसके अंदर inheritance होता है? Autosomal dominant inheritance is seen, right? So these are the features of NF1. I have already shared on social media. मैंने अपने डिफरेंट फोरम्स में, जहाँ मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, इंस्टा पे, सब जगह शेयर किया हुआ है. सो आई एम शेयरिंग द सेम इमेज विद यू. सम ऑफ यू विल बी हैविंग दिस, सम ऑफ यू आर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. एड इट टू योर नोट्स. सो इसके अंदर इसके नाम क्या क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज वॉन रेक्लिंग-हाउसन डिजीज. जीन इज NF1 ऑन लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 17, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और ये 7 क्राइटेरिया होते हैं. एनी 2 out of 7 इफ दे आर प्रेजेंट, वी से द पेशेंट इज हैविंग, इट इज डायग्नोस्टिक ऑफ NF1. तो जो पॉइंट पूछे गए हैं एंड पूछे जा सकते हैं, आई हैव मेंशन्ड इन वन सिंगल स्लाइड. यू कैन पॉज इट, यू कैन टेक अ स्नैपशॉट, एंड लेटर ऑन यू कैन ऑलवेज फाइंड इट इन अदर सोर्सेज एज वेल. मोस्ट कॉमन कार्डियक अनोमली सीन इन नूनान सिंड्रोम. ये 2 बार क्वेश्चन आया ऑलरेडी. सो मोस्ट कॉमन कार्डियक अनोमली सीन इन नूनान सिंड्रोम इज pulmonary stenosis. This is Noonan syndrome child. Noonan syndrome resembles a patient with Turner syndrome, but it arises due to PTPN11 gene mutations. They resemble Turner syndrome, but can occur in boys also. In fact, it is more common in boys, and they have webbed neck, short stature, heart disease, but they have low set ears and abnormal facies where the eyes are like this. This type of appearance is known as anti-mongoloid slant of eyes. And they do not have streak gonads. They have testes which is small in size, so hypogonadism is there, but they have reduced fertility, but they are not sterile like Turner syndrome. Right? So pulmonary valvular stenosis, yes, pulmonary valvular stenosis is the most common. So end में एक समराइज करेंगे, टेबल बनाएंगे बड़ा फ्रीक्वेंटली. मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज ही लिखेंगे. डाउन सिंड्रोम मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज, एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट, ECD. एडवर्ड सिंड्रोम मोस्ट कॉमन VSD. पटाउ मोस्ट कॉमन VSD. टर्नर मोस्ट कॉमन बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व. अगर वो ऑप्शन में नहीं है, द नेक्स्ट आंसर विल बी कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा. Noonan syndrome, pulmonary valvular stenosis. Dye-George syndrome, controversial, but this is the one that you have to remember. Interrupted aortic arch. उसके बाद truncus arteriosus, but they both are often missed, and tetralogy of Fallot is the one which we often come across. So tetralogy of Fallot, many of them can coexist together. Williams syndrome, supravalvular aortic stenosis. ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है. ASD will be seen in Holt-Oram syndrome. Marfan syndrome में aortic root dilatation will be seen along with mitral valve prolapse MVP. Congenital rubella में PDA मिलता है. Infant of diabetic mother VSD. Lithium in pregnancy, Epstein's anomaly, and high altitude in pregnancy PDA is found. Right? I'm done. So we discussed much more than what we intended. In fact, last minute I ended up adding more stuff, but I wanted it to be high yielding. It is not possible for us to meet on a regular basis, but I'll be trying to stay in touch with all of you. I hope you benefit out of it. Save this video. Do stay in touch in case you have any doubts. These are my social media details. You can follow me on Instagram, email me, Telegram में आप फॉलो कर सकते हैं. क्लिनिकल अपडेट्स, ओनली प्योरली एकेडमिक अपडेट मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूँ. स्लाइड्स जो मैंने बताया, स्लाइड्स मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूँ. एंड the combined file of this I'll try that I am able to share in some form on the DocTutorial Telegram channel also. And in the end,
tips for FMG aspirants. PDF ka I will arrange. I'll arrange. Just give me one day. It will take some time because I have back-to-back sessions going on and master classes of DocTutorials are also going on. So I just need some space to get that, but I will share with you. So multiple revisions are needed. एक revision से काम नहीं बनेगा. Focus on previous year questions of last 5 years. Any topic more than 1 to 2 times उसको डिटेल में पढ़ना है. कौन से हाई यील्ड एरियाज है जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं? माइलस्टोन्स, PEM, vitamin, metabolic disorder, common tumors across all ages, CD markers in pathology, contraception in gynae, antimicrobials in medicine, in medicine and pharmacology, monoclonal antibodies in pharmacology, rate limiting enzymes in biochemistry, anatomy and orthopedics, nerve injuries, named bodies in microbiology. Surgery is unpredictable, but major important topics. So follow the same rule. More than 2 times repeated in last 5 years. Detail में पढ़ना है. Time you give to the subject should be according to the weightage and not according to your like or dislike of the subject or the faculty, right? And give time as per weightage. Believe in yourself. You just because you are foreign medical graduate does not mean आप किसी से कम हैं. ये mind से निकाल दो. You have to sit in the exam, crack the exam, and the next stop should be NEET PG or INI-CET. If next comes by that, then we will talk about it. Right now there is no clarity on this. Don't target 150 out of as the passing mark out of 300. Go for 200 plus. It is doable. It is doable. It is all up to you. John Wick देखा है आपने, उसके अंदर एक डायलॉग है, he's a man of sheer commitment, will and focus. That is true for entrance exams also. If you are a man or woman of sheer will, focus and determination, there is no reason why you will not get selected. FMG, doable. Believe in yourself. Thank you very much. Thank you very much for staying back for so long. I have another session which has been delayed. So I'll catch all of you. All the messages which I've got, I'll reply to them later. And Sagala Charan part 2 of history taking, I'll try to arrange someday. And all the best.